talking about the academic leadership in particular at higher education. Actually, whenever something is something good has to be happen, that is because of a strong leadership in any institution, in any system. If at all anything goes wrong, for that also, there's always some blame or some saying on the leadership only, that leader could not do this or leader could not do that. So it is not only the leader who has everything in his court and is responsible for everything and everything for the success or the failure of any of the system. So when we talk about the academic leadership, it is essential for the success and growth of the higher education in our country. As we talk about the NEP 2020 also, in which also we have a strong recommendations and guidelines from NEP 2020 that if we have to be at par with the global education system, the higher education system at the global level, we need to strengthen our academic leadership in our academic institutions in the country. So that is the very important context we take into consideration from the NEP 2020. And academic leadership is the process of leading an educational institution towards achieving its goals and objectives. So how we can achieve the goal and objective of our own institution, our own university or our own college? The academic leadership provides the guidance in that direction. It involves creating a vision. That vision is very, very important. Unless the leaders do have a vision, we cannot guarantee the success or in that particular direction. So having a clear-cut vision, setting the goals based on the particular vision, and providing guidance to the fellow workers, there may be colleagues, there may be other staff members, maybe students, maybe research scholars. So they're providing the adequate guidance to them and support to the faculty members and staff in order to execute the strategies in order to to realize the vision and the goals those have been set. So this is what in nutshell we talk about the academic leadership. Why do we need this academic leadership? This one particular 2-3 minutes would try to establish the importance. In the Indian context, if we talk about the academic leadership plays a crucial role in shaping the futures of the education system. We are now striving to compete at the global level. And if we have to do so, we should always have some vision and something which would share our education system in future. And for that, we require a strong academic leadership in our institutions. And of course, it requires a sustained efforts from the policy makers. It is not only the people those are involved in the execution. At the policy making stage also, there should be some sustained efforts. The educators, those are involved with the process of the education at higher level, they also should be involved. And the researchers also are very, very important because they are collectively would address the challenges and they would try to create the environment that fosters the growth and innovation in the higher education sector. So here again, I would like to repeat, we are not only talking about the educators, teachers, faculty members. If we have to bring about the qualitative changes in the academic leadership style of the country, we need to have a very clear-cut directions from our policies. That means the policy makers has to be involved with fullest capacities to bring about the qualitative changes. The educators like we people, the faculty members teaching at the college level or the institutions are also has a very important role to play. And not only these, the educators do play the role of researchers also. At the same time, there are few researchers, they are not involved in the academic work, but they are very, very important in that sense because they try to bring about the innovations in the system. So if we have some challenges,
these challenges has to met out collectively by having the interventions, by having the contributions from policymakers, from educators, faculty members, researchers, and other associated staff members. Why? Because we want to bring about some changes. For that, we need to create an environment that will foster the growth and innovation in our institutions, in our higher education institutions and the colleges. So in this context, we see the on our slide, if we can see the next one. Are the slides moving? Hello, anyone can respond to that? No, madam, not moving. Slides are moving? No, no, madam. No, Oh, ma'am, not no. moving. Are they visible? Yes, No, ma'am, Yes, first ma'am, very slide is visible. Okay, all visible. right, all right, all right. So first slide only talks about the leadership development in Indian higher education. We start with a very important quote, and which is from the Texas University Vice Chancellor. The toughest job in the nation is academic leadership. So not only in our country, in other countries also, the academic leadership is considered as the toughest job. Why is so? When we talk about the leadership, we do have different ideas coming from the word leadership itself, and we say the leaders are born or leaders are made. And there are lots of discussion on this particular aspect, and we come to a consign where we agree upon that leaders are made. And why is so? Because if we do not agree to the concept that leaders are made, we should have not been sitting today like this and learning about the academic leadership. If leaders are to be made, then only some certain kind of training is required, some certain kind of orientation is required, that so as how every individual can flourish, can develop themselves as the efficient academic leaders. So this particular program on the academic leadership is also gives the agreement to the statement that the leaders are not only born. Some people may born with some certain traits, and they help them to become the effective academic leaders or effective leaders for that sense. But at the same time, the agreement on the point that leaders are born. So this particular slide where you see where we do have the worry about the academic leadership, and it is being said the toughest job in the nation is the academic leadership. We can do anything, everything, but this academic leadership becomes very, very important. And why this academic leadership is so important, why the academic leadership has that importance, the current slide would give you that idea. Because the academic leadership only provides the strategic directions. If we do not have a proper, what to say, the directions, we cannot flourish, we cannot assure the success. So for that, very important thing that we should have some certain directions, and it is the task of the leadership, it is the task of the academic leader who would try to find out the directions, would try to set the goals based on those directions, and will say, okay, this is the way we need to follow. So for that, the academic leadership is very, very important. The another point when we see on this slide, the second point is promoting academic excellence. We all are aware, we all are working in the area of the higher education, and we are very well aware of the fact the present scenario in the higher education setup and what all problems we do face. And many a times we do talk about the academic excellence. So if academic leaders are not with us, or the academic leaders are not performing their role with the enthusiasm and the effectiveness, we are directionless, and at the same time, we are not able to promote the academic excellence. So in order to promote the academic excellence also, we need this kind of academic leaders. The research and innovations, there is a dearth of the innovations in our country. Be it any of the sector, we always strive for the innovativeness in the system. So as in the higher education system also.
the kind of researches we are producing these days, and not these days, in the last few decades, and the kind of scholars we do have, and the sometimes I'm very ashamed to say the research market is also flourishing in our country. So the kind of researches we do have, with those kind of researches and innovations, we cannot just talk about the excellence in the area of higher education. So we need the leaders, those can foster the research in its true sense, and which is led by the innovations, and that we can talk about the some changes in that area. The enhancing students' experiences, for that also the leaders are required, because it is the leadership only which decides, which determines in collaboration of the faculty members and the other teachers, that what kind of experiences to be given to the students. And that is how the academic leadership is very much required in this aspect also. The institutional reputations to be built up, the institutional reputations to be strengthened. And for that, we do have many accreditation systems. We do talk about the NAC accreditation. We do talk about the this national framework for ranking of the institutions. So these all institution reputations, we do have the gradings given by the NAC, A plus, and certain kind of thing. So in order to aspire and achieve those institutional reputations, we need the strong academic leadership in our institution. And of course, that is very, very important, the financial sustainability. If financial sustainability is not there, we cannot talk about any other point which we have discussed prior to this, because financial sustainability always provides a free hand for working, for free hand for innovations, let it be research, let it be academic excellence, or the strategic planning in any of the direction. So that also is very, very important. So this, after having the establishing the importance of academic leadership in our institutions, in our colleges and universities, we need to talk about the another very important aspect when we talk about the academic leadership in higher educations. There is a very basic need of adaptability. There's a need of transparency and inclusivity. The adaptability, when we say, the leaders are supposed to be open for any kind of changes and to adopt the newness, to adopt the innovations and the new practices. The transparency is very, very important, because without having the transparency, we really cannot aspire for the qualitative changes in our system, because transparency provides the, in instance, the confidence in the individuals, and that supports the system of the belief in the system, in the environment. So this is how the transparency and inclusivity, of course, that is very, very important. Without inclusivity, we cannot really go further. And there are two very important aspects when we talk about the academic leadership, and that they are related with the management and the decision making. So this management of men, management of machines, management of money, and management of everything in the institution, within the institution, and the management of the relationships beyond the institution. When you have some kind of a relationship with the other institution, when you try to share the resources with the other institutions, and there also we need a kind of, the leaders need a kind of management skills. And decision making is another very, very important aspect, because without having the strong and prominent decision making, we cannot go anywhere, because decisions are to be taken by the leaders boldly. And that boldly really has a meaning, because sometimes the delay in the decision also makes the things worse. Sometimes the decision which is not taken also may not bring the institution to any other aspects. So this is how we see the academic leadership is important, and it is a broad and complex field. And there is a literature also, when you find on the when you survey the literature on the academic leadership, you will find many of the things related to that. But in today's session, we would be talking in very briefly about the
what is required for the academic leaders in the higher education institutions, in the colleges, that what so that the institutions move towards the excellence. So that is how we say the academic leaders play a very important and a crucial role in order to promote the innovations and of course to meet the challenges in the institutions. And this may involve creating the culture of the innovations, developing the partnership with the industries and the other institutions, and supporting the interdisciplinarity and the collaboration. This interdisciplinarity later in other slide we'll discuss again with some more vigor. So here, when we talk about the concept of leadership in India, we find that this concept of leadership in India is not a new concept, dear friends. We have been talking about the higher education leadership development program. Long back, it has been launched in the India, and there had been the leadership training and leadership development. The people were being developed as the leadership through this very particular program, which is named as HELDP, Higher Education Leadership Development Program. After that, you all might have heard about Rashtriya Uchtar Shiksha Abhiyan, RUSA, RUSA, which is commonly named as. So this Rashtriya Uchtar Shiksha Abhiyan also had a very important component of academic leadership, and it was talked about that through this Rashtriya Uchtar Shiksha Abhiyan also we try to develop the academic leaders in our higher education institutions. Now we talk about this national institutional ranking framework. This national institutional ranking framework is also something which always puts a pressure that they you stress, we say, on the institution that they should be named in national institution ranking framework and IRF में उनका नाम आना चाहिए. Our institution should be recognized in RIF ranking. So that also somehow brings about the academic leadership aspect into the picture. And this very program, which is currently we all are the part of, that is PMMM and MTT, that is the this Pandit Madan Mohan Malviya National Mission of the Teachers and Training. So this is another very important and very prominent step taken in our country in order to develop the academic leaders. And academic leaders, my dear friends, we should not think that a leader would be just one only in the institution. The overall in the institution, one leader may be there in the bearing the post of the principal or deans of the different schools or the head of the department. But each and every faculty member in his own is a academic leader. And how that would try to prove in some forthcoming slides. And I'm sure that you all would understand this aspect that each one of us are in the position of leading, and that is the position of leading academically. If we do not have any administrative responsibilities, if we do not have any position in the system, but still we are the academic leaders. Why? Because we do have a very strong force behind us. We do have a very vast people, those may follow us and they may strive for the excellence and the quality always if we are successful in our role as the academic leaders. We all are the teachers, and teachers have the potential. They can create the nation, they can destroy the nation. So in that very sense, I'm trying to put across the point that, dear friends, each one of us are the academic leaders in our own way. हम अपने आप में ही एकेडमिक लीडर्स हैं. हमारे फॉलो करने के लिए हमारे विद्यार्थी हैं, हमारे साथ में हमारे स्टूडेंट्स की एक बहुत बड़ी फौज है, बहुत बड़ी फोर्स है. और इफ वी कैन establish ourselves as the academic leaders, so we can provide the educated guidance to this youth of the nation, and those only would bring about the changes in the system in the tomorrow's scenario. So today, if we work, if we realize our potential, if we realize our responsibilities in that sense, so we'll be contributing in order to convert the Bharat into the Viksit Bharat by 2047, which we all are aspiring and we all are the part of.
and we are very fortunate generation. Those are seeing this transformation, those are witnessing the development in the all areas across the country. And from our side, this is the small contribution and small efforts, but it's a big contribution. I'm sorry. It's a great contribution we are making, that we are dealing with the youth of the country, and we have that caliber to transform the generations. So in that sense, dear friends, we all should consider ourselves as the academic leaders. So this is the leadership. These are the, various efforts those have been made in our country in order to develop the faculty members and the teachers as the academic leaders. And now we talk about what the academic leader should know. I would like to see your opinion also. You can open up your mic, you can unmute and you can tell us that in your opinion, what all is that academic leaders should know? Do you have any points to mention in this? We are always having some of the other leaders in our surrounding and we are working with them. We are sometimes satisfied, sometimes we are not. But we have that thinking, those ideas always with us, that what all that academic leader should know. Can you come up with some of the ideas? Any one of you, please? Pardon, ma'am. Yeah, my question is, hope my voice is clear to you all. Yes, ma'am. Yes, your voice is clear. So my point is that we all are having some or the other academic leaders in our surrounding. Some of us Yes. may be formally also in the role of the academic leaders. So I wish to know from you all that what the academic leaders should know in order to justify their role as the academic leader. Any one of you, please? I mean, that is what all idea academic leader should have. जब वो अपनी जिम्मेदारी को अच्छी तरीके से निभा पाएंगे. Okay, let's go further. The academic leaders should know the challenges and the opportunities. What are the challenges the institution is facing? What are the challenges a particular college or the university is facing? And what are the opportunities? How the institution can be taken to the further height in terms of the quality. So the leaders should always have the idea about these challenges. Those are being faced. Like in many of the higher education institutions, we do have the challenges of the admission of these students. That maybe in some particular courses, in some particular subjects, we have the opportunities to have the collaboration with some industries. We do have the opportunities to have collaboration with some other institutions. Those are having much resources compared to our own resources. So what are the challenges we are facing in the institution and what opportunities we may drag and bring about the changes in the institution are very important aspect and leader must know. We talk about the inclusivity and the diversity. The inclusivity is something which is very discussed in very detail in our NEP 2020 also at the present time. So what this NEP 2020 gives us about the inclusivity, the inclusion of the all the related aspects. At the same time, the diversity, because when we talk about the inclusivity, we cannot just go away with the diversity aspect because the diversity Municipal authority. राहिलं त्यावेळेस सँक्शन जे आहे ना सर कुछ कहना चाह रहे हैं ये गलती से अनम्यूट हो गया है. Now the next point we talk about the ethical considerations. What ethical considerations one should keep in mind so that we can take our instincts towards the qualitative changes. So these ethical considerations are related to the accountability of the employees, let it be the faculty members or the staff. They may be
related to the value system of the employees, the work culture as a whole of the institution or the organization. So these ethical considerations are also very, very important. And adaptability and future outlook. The leader should always be ready to adopt the diverse ideas coming from the diverse corners, and they should always have the futuristic outlook that what all changes may be brought, may be done in the present and or the existing system. So if the leaders are aware of these all things, they'll help them to um, set their role as the important and effective academic leader. And as we have already discussed, what these academic leaders are supposed to do and why their importance is there, because their importance we see in the strategic direction setting. So academic leaders' roles is very, very crucial in the setting of the strategic directions of the higher education. They develop and articulate a vision for the institution. And that is a regular practice in each of the institution. We do have our vision of the institution, we do have the mission also of the institution or the organization. So they try to develop and articulate it in a very clear-cut manner, and they ensure that all the stakeholders are aligned with it. Our vision and the mission of the institution may not be in isolation unless we involve all the stakeholders. When we talk about the stakeholders, we do talk about the teachers, the faculty members, we do talk about the students, and of course the community, the industries, the academia. When they all are in, they all go hand in hand, then only the strategic directions can be set by the academic leaders. And here only we talk about the academic excellence, which need to be promoted by the academic leaders. So the institution always try to maintain a high standard of academic excellence. No one of you can deny of this fact. We all strive always for the academic excellence. So what the leaders do, they oversee the development and implementation of academic programs and ensure that they are the rigorous and the relevant. Whatever the institutional programs or the academic programs are being designed, they should be rigorous in nature and they should be relevant also of that particular institution. So that is how the leaders, they become quite important. They try to foster the research and the innovations, the culture of inquiry and the intellectual curiosity are being developed among the faculty members and the students by the academic leaders. So this research and innovation also being promoted, and that may be promoted by facilitating the faculty members in multiple ways, and of course to the students also for the training in the institution, outside the institution, etc. And these students' experiences also to be enhanced, and for that the high quality resources to be provided, the facilities to be provided, and their personal and academic development to be facilitated by the academic leaders in the institution. And of course, for the institutional reputation, they do work, and how the institution reputation can be earned. They need to show the academic excellence. They need to show the research output. Those are go in line with the community demand, and the community engagement also is the very important aspect. And financial sustainability, as we have talked about, the academic leaders need to develop and implement this sound financial management plan, and they need to have collaboration for the fund generation for the institution or the organization, and they should have the long-term relationship with the industries also, so that they can be doing their role of the academic leader with the most of the rigor and the effectiveness. So these are some of the aspects. Now the academic leaders, how and what they can do. So they talk about the future trends that will influence how work is to be done. If any leader which is not visionary, which do not talk about the future, they will be behind somewhere in spite of having put many of their efforts. So we always should need to be futurist, need to have the futuristic approach. What is the futuristic approach? In today's sense, we talk about, we say this
technology-driven society. We talk about the technology-driven society. We do have many of the trends in the society where the technology is going to overpower the many of the aspects of our life and society. So if we do not have that vision that technology should be the part and parcel of our curriculum in our colleges and the universities, we cannot meet with the future demands of the community and the society. And if we do not look in we do not have this futuristic vision, as a leader, we cannot be successful. The other aspect in in the continuation of the same, that they should be able to describe the images of the what our future might be. Not only they should be thinking about the future demand, the futuristic vision they should have, rather at the same time they should be able to describe the image of the future in front of the followers, or we say in front of their team, that what kind of future would be. They should be able to speak out with absolute certainty about the ultimate meaning and the purpose of our work. If they are talking to the team of the teachers, what is required from the teachers? In very clear-cut terms, the leader should be able to communicate to the team of the teachers. If they are talking to the other staff of the college, other staff of the institution, they should have the clarity in their speech that what they demand from them, what they want out of their work. So that clarity is very, very important, and the leaders should always have the clear about this. And the leader should be able to paint a picture of what we aspire to achieve in future, not only as an institution, not only as an organization. The leader should have to portray a picture for the individual itself. That as if I am a teacher in a very particular college, what my future would be, what I wish to achieve in my future. If the academic leaders are able to instill this feeling in each of the individual, altogether collectively their institutions are bound to excel. So because that motivation comes from each one of the member of that particular institution or the organization. We have often seen the situation in which some of the people and some of the faculty members of our college or the institution are highly motivated, and they are ready to turn every stone in the interest of the institution. At the same time, the majority of the teachers, they are having the attitude, who cares, why me, why we kind of thing, and they really do not contribute. So in that case, the success of the institution is always questioned. So what a leader should do? A leader should try to motivate each one of the member of his team that what they want to achieve in their future. If this is done, the success for this institution is ensured. And apart from this, the academic leader should show others that their interest also can be realized through a common vision. For instance, I'll take one example. If our institution is undergoing for the NAAC accreditation, one of the very important aspect is the research and development. When we talk about the research, when we have to put across our institutional report to the NAAC team, that time the researches done by each and every individual at their own level are compiled and put in the form of the report. So if leaders are able to motivate to the individual that your personal interest, that is the researches for the API purpose, when they are combined together, they become the common vision of the institution, and having involved your personal work and after having compilation of the personal work of each of the individual, that becomes the institutional repository, and that brings the name and fame for the institution. This is how the academic leaders can show the others, all the team members, that their personal interest can also be realized through a common vision. So there are two ways. Either they say you bring the qualitative publications so that our institution would be aggregated with the better ranking through NAAC, or else they can say you bring out the qualitative publications
and you do the quality research so that your contribution of each one of you would help to bring about the reputation for the institution, or that institution would bring about the reputation to you. I'm very proudly say my own institution is accredited as A++ by NAC. And dear friends, believe me, each one of us, each of the faculty members in the institute is strive for the quality. They all work so hard so that collectively it becomes, they work for the common vision of the institute. And since this A++ grading to the institute brings so much of fruits for us, because we very proudly mention this, as I have mentioned just before, that we belong to the A++ institution. So it's a two way. जब हम अपनी पर्सनल चीजों को बेहतर करने की कोशिश करते हैं, तो हमारा जो कॉमन विजन है, जो हमारा इंस्टीट्यूशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो बेहतर होता है. और जब हमारा ऑर्गेनाइजेशन बेहतर है या हम उसके लिए कोशिश करते हैं, तो इंडिविजुअली तो हम बेहतर होते ही हैं. So that is how an academic leader must have that clarity, and that will help each one to be motivated. So this is what the leader should know. And now the leader should be able to create the collaborative relationships. Now, these relationships are very, very important for the leaders. And without having the collaborative relationships at the many front, it is not possible that our institution should be able to flourish, or that would be able to, bring about the qualitative changes in the system. So for that reason, what is required? That's how this relationship can be maintained at the diverse level, and that is not only the relationship, that is the collaborative relationship. So here we talk about the leader has to listen well to the diverse point of views. If we are trying to strive ourselves to become the academic leaders, the effective academic leaders, we always should have ear for every point of view. It is not that whatever is our thinking, whatever we feel is correct, is always correct. So we should have the open ear for everything, for the diverse point of view and the voices from the diverse corner of the institute or the organization. And now the other point that is very, very important in order to create the collaborative relationship, that we always should treat others with dignity and respect. We should have the dignity for each of the member of our team. And at the same time, we should be treating them in a very respectful manner. If we do not have the dignity maintained, if we do not have that respect for the faculty members, fellow faculty members, or even for the students and other staff, we cannot say that we are transforming ourselves as the academic leaders. So, in order to create the collaborative relationships, we always should have the ear for all, the open ear for all. We always should have that dignity and respect for the others. And we should always try to support the people's own decisions also. Because many times it happens, we try to force our decisions on the other people. So that space always should be with the academic leaders. They should support the people's own decisions, because sometimes their own decisions also can bring about some qualitative changes into the system. And the academic leader should provide the ample freedom and choices in determining that how the team members would work. For instance, a teacher, a faculty member as an academic leader would have given that freedom to the students, that how a particular project or assignment would be completed. We should not have one very clear-cut mindset, clear-cut idea before us, the way of working, and thinking that the only way of working is the working of mind. No, we should always have given freedom and the choices, so that the people work in their own ways. So this is for the what about the collaborative relation, maintaining the collaborative relationships. Now we do have the another idea where we talk about
how this relationship can be ensured at the workplace. Dear friends, we are talking about the academic relationship. When we talk about the academic relationship, we do talk about the many of the uh, constraints and the aspects that what academic leader, the effective academic leader should have. So we have already discussed about academic leader should have the vision for the institution or the organization. The academic leader should have the collaborative approach. The leader should always be ready to collaborate at the multifold dimensions. The academic leader should have the space for the innovativeness and appreciation for innovativeness. They should have the inclusive thinking. They should have the transparency with them. And the mentorship is also very, very important because having this mentorship with the academic leaders, because sometimes they themselves mentor to the team members, and if it is not possible all the time, these academic leaders would make other people to mentor to the fellow colleagues or the students or other staff members, or even they may designate some people as the leaders or the team leaders, and they can form some small teams, and this mentorship model can be practiced. So for the framework, a particular framework, if we talk about, so the vision, collaboration, innovativeness, inclusivity, transparency, and the mentorship. Now we say, when we have this collaborative relationship, if we wish to ensure the relationship at the workplace, what all is to be done? So what all aspects we need to look into? The relationship among faculty members. If we are striving for the excellence of the institution, we cannot get it without having the cordial relationship among all the faculty members of the institute. This is what I speak from my own experiences of 20 years, dear friends. If we do have the cordial relationship among all the faculty members, for sure our institution would flourish, and we also would excel as the effective academic leaders. So this relationship is very, very important, that is among the faculty members and of course with the other supporting staff of the institute. The another very important aspect in the continuation is that the services which is to be provided to the beneficiaries and the maintenance of a strong relationship with the beneficiaries. So in a very simple term, we do talk about the faculty members as a academic leader. And if we are the academic leaders, our beneficiaries, the group of beneficiaries comprises our students and our research scholars. Not much of the varied group we have. We have as the beneficiaries our students and the research scholars. So we should always have some certain services at the institution level, at the organization level, the university level to the beneficiaries, always ensuring the services to the beneficiaries, and we should always maintain the strong relationship with them. If we are striving to make our institution as a center of excellence, we really cannot do it without having the strong relationship and involvement of our students in the system. So if we have to ensure their involvement, if we have to ensure their participation in the system, for that only we have seen the NAC accreditation criteria, in which we find that there are so many student related points, that whether the students are having proper services provided by the institution or the organization, or whether this relationship is being maintained among the faculty members and the students in the institute. That becomes very important aspect. So this also we need to ensure. And the other very important aspect is that we should have the appointment of the people suitable to their job profile. If we do have the people, they are not suitable for their job profile, we'll have a chaos in our system and we cannot strive for the excellence. And for the evaluation of the faculty members and the staff members, very specific criteria also to be designed. And after having this clarity in the criteria for the evaluation of the faculty members and staff members, we may
maintain a very healthy relationship with everyone in the workplace. And there's very important aspect, the scholarship, which is related to the research scholars and the students and the organization of different kind of seminars, conferences, etc. in our institution. That also we need to always have in order to keep the pace with the upcoming developments and the advancement in a particular area. So those scholarships would be given timely. Those students should have the satisfaction, and when students would have that satisfaction, then only they contribute in the excellence of the institute. And the seminars, conferences, so etc. Also, we should be organizing periodically to the institute or the organization, so that our students also are having the pace with the upcoming developments. What happens when we go to some certain institutions in order to attend some conference or the seminars, etc., only some certain group of people are benefited, because let's say 10 or 12 people from the institution are going to participate. But at the same time, if we organize a kind of seminar, conference, etc. in our institute, the whole of the institution is benefited. Why? Because all the students in some or the other way would be participating in that. They would be witness to that conference or the seminar, so as the staff members and all other faculty members as well. So that is also very important aspect when we try to ensure the relationship at the workplace. We should have some kind of events organized at our institution or the organization, so that we are able to maintain the relationship at the workplace within the team, and of course with the other institutions, other organizations. And the very important aspect again comes, I always write it at the end, the financial and more support to the researchers for their internal and the external training program. So this also to be ensured by the academic leader, and the support to be given to them. And as we all know, why this all is important for us as the teachers, that universities plays a very important role in the development of the nation, and with a snowballing effect on the entire world. Is whatever is being done at a very particular institutional level, that always have a long lasting effect on the society as a whole. So we should never forget that our one good deed in any direction would always be very important in order to bring about some certain qualitative changes in the society. So we should always be full of hope, full of motivation and enthusiasm, so that we can bring about some changes by applying these small steps, small initiatives at our own level. And this also we all understand that whatever we saw, whatever we live, at higher education also, the same thing is there. And the another very important aspect we say that universities, they contribute to the lower and all other levels of education through the teacher training and education research. And therefore, we are again working in order to attainment of the Millennium Development Goals and Sustainable Development Goals and other targets set up. Those are of the national importance. So, and now we'll talk about some of the challenges those we have we are facing in the institutions and in our colleges, and of course at the university level. So what these all challenges could be, and how we can make about these challenges. So if I ask you what are these challenges, for sure you would talk about some of the very important aspect. And in the higher education system, we always say there's a lack of focus on the innovations. We do not having the innovations, let it be the IITs, or it could be any of the central universities or the state universities. We are always having the dearth of the innovation. We do not have much of the innovation, so that challenge we always face.
Why? Because if we are striving ourselves to develop as academic leaders, we should understand in very clear-cut terms that what challenges we do have. So lack of focus on the innovations we do face always. The another very important challenge we do have that lack of accountability. Let it be the any newly appointed teacher or sometime very renowned and experienced professors in the system. Everywhere, some or the other, we will find that the people are lacking the accountability. So this lack of accountability, and again, that is a very big challenge for the academic leaders. If leaders has to involve everyone for the excellence of the institution or the organization, how we can ensure the accountability from the each one of them so that they work for the institutional excellence. And we do have the limited resources. That is another very important challenge before us. How this can be met out once we have discussion on the limited resources. We'll discuss in detail about this. The emphasis on the grades, that is again another very important challenge before us. Although the NEP provides us such a broad guideline that how we can done away with this grading system and how we can have that a bank of the academic scores, and there are so many concepts those have emerged from the NEP 2020, but still this emphasis on the grades and the grading system is still instilled in the minds of the society members, community members, and of course on the even the faculty members also. The lack of collaboration that we always feel in our institutions, organizations, not always, but this is also one of the biggest challenge. And the another is the resistance to change. We are not very open to change. We are not having that openness for the change. We are in our comfortable zone and we just want to be as we are. So these are some of the changes. I would like to again focus on the we have the lack of the innovations, we have lack of the accountability at the human resources, we have the limited resources, we have the much emphasis given on the grading system, we have the lack of the collaboration at the institution level, the inter-institutional collaboration also is lacking. Like we tell you very frankly, dear friends, if another institution have something, we have some hits to ask for, we have some hits to approach for it, and we always keep on complaining that we do not have this, but we hardly try that if some other institution have that, how can we collaborate with it? And we are having some resistivity for the change also. So how, if we are having these challenges, how these challenges can be met out? So if we talk about the lack of innovations, obviously the innovations should be given much importance in the institutions. Now, how these innovations can be given importance? We have all autonomy in the curriculum design, the curriculum innovativeness. So through this curriculum, we can try bring about the innovations in our system. We have the faculty members, and those faculty members may have the partnership with some certain industries, may have partnership with some certain sectors of the community and the society. So this is how we may promote the innovations in our level. For the accountability of the human resources in the institution, we may talk about the creating a very conducive environment in the institution, and we may talk about the ethical conduct also. We should always be pressing upon, we should always be giving importance to the ethical conduct of the staff members and the faculty members in the institute. By having this, we may create a very conducive and the good environment, healthy environment and the relationship among the people. And once they are happy from within, for sure, they would like to be accountable for the system. So by creating a cultural and ethical conducive environment, we can try to meet about the accountability. We may have the resource mobilization. So for this, so as we have already mentioned, the partnership can be done with the other institutions and with the other industries, and this resource mobilization can be done if we talk about the lack of collaboration.
we do have the another very important aspect, and that is a challenge when we say that we have much of the emphasis given on the grades. How can we change this? We can change this by having the much of the emphasis on the skills. And this is how again the NEP 2020 gives us guideline that how the skills can be uh, developed and how the skills can be given much more important comparative to the grades, so that the we need the shift from the grade to the skills. That is again very important aspect. And we now talk about what the other challenges we do feel. So many of time we find we do not have, not we, many of the members, they do not have a very clear-cut understanding about the institutional ethos, the institutional mission and vision. If I'll ask you about the institutional vision and mission of your own institution, your own college or university, I'm sure many of you would have to think twice to speak up about the mission and vision. So if we do not have that clear-cut understanding about our own institution, our own organization, how can we try to make out those qualitative aspects? And we do have always the strategic plan and the mapping. That also is a challenge because our leaders are not able to map the vision with the strategic planning. So that there also we do fail the transforming institutional individuals and nation and the world. This challenge again we do have the increasing access with equity, the resource mobilization, internalization, accreditation and ranking, the governance, the teaching learning, employability, as we have already mentioned about the grading and the skills and developing research capability. So these are the some of the areas where we see that and we need to work upon, because these are the challenges before us. And we must say that change and the innovation at the university or any institution or the organization level is necessary for the improvement to adjust to the changing academic or economic conditions. Because this is what we want. Our academic conditions should change, and this change in academic conditions would bring about the change in the economic conditions, and wherein we talk about 2047, where we talk about the Viksit Bharat. So this only will help us to make out those challenges in between to reach to our goal, our mission, vision, and at the end, what we say, we will have this uh, journey towards the mankind, because Bharat does not stops with the institutional excellence. Bharat never stops with the excellence in some particular areas, like in Bharat, in India. In India, we always talk about the Vasudhaiva Kutumbakam. That means we talk about the mankind. हमारी चिंता सिर्फ हमारे लिए नहीं है, हमारी चिंता सिर्फ अपने इंस्टीट्यूशन या अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं है. हमारी फिलॉसफी में हम हमेशा पूरे बृहत रूप में चिंतित हैं और हम पूरी मानवता के लिए चिंतित हैं. तो यदि हम छोटे छोटे से अपने प्रयास कर पाए और इन छोटे छोटे प्रयासों के माध्यम से हम अपने अपने इंस्टीट्यूशंस में एक्सीलेंस को ला पाए, हम अपने आप को एकेडमिक लीडर के रूप में डेवलप कर पाए, तो ये हमारा एक बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा इस पूरे हमारे भारतीय विजन के लिए और हम पूरी ही मानवता के लिए. So that's what I need to talk about through this presentation. And I have not mentioned one very important aspect, and that I would like to bring about into the notice that when we talk about the academic leaders, this what the NEP 2020 talks about the academic leadership and why academic leadership is given this importance. So that we understand, we have seen many slides in which we have talked about why this leadership is important, why what the leadership should be working, what should be the way of working, what kind of mission and vision they should have, the challenges the leadership face, and how these challenges can be met out. Just in the last slide we have talked about. Now we talk about a very important aspect wherein we say the some context we take from the NEP 2020, the National Education Policy, which is very visionary document before us.
very recent document, and which also do talk about the many of the aspects related to academic leadership. So how the academic leadership in context of the NEP 2020. So what the NEP 2020 says, it puts due emphasis on the curriculum design. And dear friends, I'm sure all of us at some part or the other, we are involved in the curriculum design in our institutions. Let it be the members of the board of studies or simply as a subject teachers also. So this curriculum design, if we try to develop ourselves as the academic leaders and if we strive for the excellence at our institutional and the organizational level, what NEP says? That NEP says that you design a curriculum in such a manner so that it fulfills the requirement of the 21st century skills. Now, what are these 21st century skills? Dear friends, I'm sure we all are aware of. We talk about the flexibility, we talk about the communication skills, we all talk about the adaptability. At the same time, we talk about the digital skills, the digital awareness and those efficiency in using those digital skills. We talk about the critical thinking, we do have the inquiry-driven approach. So these all aspects related to the 21st century skills can be brought into the curriculum of our institution, organization, or the university. So what outcome we get from here and how this curriculum may be designed? This curriculum should have the elements of flexibility. And NEP has a very clear direction about this flexibility into this document. So this flexibility can be ensured. The another very important aspect which NEP puts emphasis upon is the interdisciplinarity. We should always try to bring about some changes into our curriculum wherein there is a due space for the interdisciplinarity. Although it was existing before also with some of the very so-called good universities and their curriculum, but this should become the part and parcel of all the curriculum design at all levels of the higher education. And the curriculum, we should design a curriculum that should be promoting critical thinking and problem solving approach. So we have ample of the opportunities while designing a curriculum for our own level that we should give importance to the flexibility, interdisciplinarity, the curriculum that promotes the ethical thinking, the problem solving, and ultimately that promotes the 21st century skills among our students. So this is the NCF, in the NCF context, NEP context, we talk about. The another very important aspect which dealt with the pedagogical practices. So in the NEP 2020, we have the clear-cut guidelines about pedagogical practices also. The NEP 2020 lays due emphasis on the active and experiential learning. When we talk about the experiential learning, that means we are leaving no stone unturned in order to provide the experiences to our students. And that could be in the form of the laboratory experiences, that could be in the form of some field visits, that could be in the form of some industry visits, inviting some resource persons to the institution, inviting some academia or the industrialist to the institution, and providing opportunity to our students for one-to-one interaction with the people the people those are excelling in their own field. So this pedagogical practices, those promotes the active participatory learning experiences for the students, and the kind of pedagogical practices, those motivates the use of the other innovative teaching practices, not only the experiential learning. There is no dearth of the innovative teaching learning practices in today's world. And we all are aware of that. Only thing we need to bring upon the changes in our day-to-day practices. That means those innovative teaching practices will be practicing on a day-to-day basis. And
The another very important aspect the NEP talks about is the research and innovation. We should be giving due emphasis to the research and innovation aspect in our curriculum design, in our pedagogical practices in the institution, so that we move towards the academic excellence in our institutions. And internalization is another very important aspect, and internationalization, where the NEP provides some guidance to us that we may have the partnership with some international universities. Either we invite the international universities to us, or we may have some kind of collaboration with the international university. The kind of collaboration is we may have some student exchange programs with the some international universities. At the same time, we may have some faculty enhancement, faculty development or exchange programs also. Our faculty may visit to the different universities in the world, and the faculty from there also may be invited to our universities or the organizations. And we may have offering some of the programs, some of the courses, those are of the international level. So that also is the guideline we have from the NEP 2020. So not only our curriculum design, our pedagogical practices and research innovation, along with the internationalization of the higher education would bring about the fruit for us in order to develop our institutions as the center of the academic excellence under the academic leadership of the able faculty members. And the another very important aspect where we talk about the governance and the administration. This NEP has a quite detailed guidelines on the governance and administration also. We should always supporting and promoting the transparent, accountable and efficient, transparent, accountable administration. And we should always have that efficiency in our governance policies and the administration. So these are very four important aspects or the guidelines which is provided by the NEP 2020 so that we can work on, so will be not only working in line to the academic excellence as per the NEP 2020 guidelines, but otherwise also we would be bringing about some changes in our own practices, and as an individual also we would excel if we try to bring about the changes in our pedagogical practices, in our curriculum design, etc., etc. So now since NEP provides us these guidelines, what our academic leaders need to do? यदि हमारे पास में ये NEP ने हमारे डिक्शनरी डॉक्यूमेंट में गाइडलाइंस दी हैं, तो हम एकेडमिक लीडर्स को फिर क्या करना है? फॉर द एकेडमिक लीडर्स, they should focus on the vision and strategy of the institution or the organization. Very clear-cut vision, very clear-cut strategy should be made at the leadership level. And there should be the capacity building of all the members of the system in the university, in organization, in institution, wherever we talk about, the leader should always have a focus on the capacity building. Unless the capacity of the individuals are built up in any institution, we cannot just think about the excellence as a whole. So individual capacity building, and then the another very important aspect, the leader should have those collaborating skills. We have already talked about the relationship and collaboration with the community, the relationship and collaboration with the other institutions, relationship and collaboration with other institutions, with the community members, with the industries, society, etc., etc. So wherever we find the opportunity for the collaboration, we should always try, the academic leaders should always try for that. And very importantly, we should always have a due space and respect for the innovation. We should never be discouraging the kind of innovation, let it be very small or great. We should always have that respect. We should always have the space for the innovation in our institutions. And as a teachers, we may provide that space to our students. As a leaders, we may provide that space to the fellow teachers and to the
our supporting staff and the other members. So this is what about the NDP 2020, what is talks about and how we can make about this by having the capacity building, by having the collaboration, vision strategy and the innovation. And at the end, I would say there are two, three very important aspects which we generally miss, and that is the participation of women in the academic leadership. Why it is very, very important? Because if we do not provide the due space to the women in the academic leadership, because this point comes from the experience that in most of the institutions will find a very less women at the position of the leaders, very less. We may name some, but the percentage when we say averagely in Bharat, it is very less. So we are not providing due space to the diversity and inclusion if we are not providing the due space for the women leadership, women academic leadership. So if we have to provide this women due space to the women academic leadership in the institutions, in the colleges, or I mean to say, we should not provide that the women, they should come up, they should emerge as the leaders. So what is required for that also? I would say the mentoring model would be a very effective model. The women, those aspire to become the effective academic leaders, the mentoring to them to be provided in a very adequate manner, and the if you, by doing so, we'll be providing the respect to the diversity and inclusion also. And for that reason, we may form, and in some of the institutions, I'm sure there are already, the committees has already been formed, like diversity and inclusion committees. When kind of committees are being formed in the institutions, they always try to incorporate all the aspects of diversity, and they always try to include the all aspects into the leadership elements of the institution. So this is one aspect. The another very important aspect I would like to bring about your attention, that is the technology and the academic leadership. In today's world, where the societies and the entire world is technology driven, we cannot just ignore the technological aspect for the academic leadership also. So for this academic leadership, to bring about the changes in the academic leadership styles and to give due space to the technology in the academic leadership styles, we have to start right from the curriculum design. We should have the due space and in the for the appropriate technologies in our curriculum. When we design the curriculum and as per the guidelines of NEP 2020, we always should have that in our curriculum. We should always promote the digital literacy in our surrounding, and we should have we have many online learning platforms. By taking the help of these online learning platforms, we should always motivate our students and the fellow teachers or faculty members to learn the many things from these online platforms, as this PMM and this program, the Pandit Madan Mohan Malvi Mission for the Teachers Training is being, this also is using the technological platforms only. So for other learning also, we may promote and we may motivate our students and the fellow teachers. We should always be for the innovations, and research and innovation should be given the due importance. And we should have the investment in the digital infrastructure in our organizations, in our institutions, because that is the point where we all are, our hands are tight. We do not have the adequate investment in the digital infrastructures in our institutions. If we are able to provide the adequate amount of investments in the digital infrastructure in our institutions, for sure we would be trying to, we would have a one more step towards the technology and the academic leadership partnership. So with this, I end up and
what I have to say, I have said and shared my understanding with you all. If you have some questions, if some kind of query or your ideas you would like to share, you're most welcome. Dear friends, Thank you, ma'am. It was very informative session. It was thought provoking. Thank you so much, ma'am. so no questions, that means. All right. It was about academic leadership only and how we can develop ourselves as the academic leaders in our own institutions, in our own colleges. So the talk was about that only. And I'm sure some of the newness or some points, those you might have read before, but they have been repeated with some much more rigor and emphasis, and they'll be useful for you all. So with this, I end here. Thank you for providing this opportunity, and thank you everyone for this patience listening. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. If your permission, we conclude our session. Yes, please. Okay. Good afternoon to all. We conclude today's program. It is my privilege to propose a vote of thanks on behalf of entire the institution. I extend our deepest gratitude to our course coordinator, Dr. Ashtaputre ma'am, HRDC Director Rafe sir, and today's our speaker, Dr. Sharma ma'am, for sparing their valuable time and sharing their inspiring insight with us. I express our thanks to our course coordinator, Dr. Ashtaputre ma'am, our director, Rafe sir, supportive hand, Mr. Amol, Gaurav, and whole entire team for their guidance, unwavering support to us. Finally, thank you to our wonderful participants for active participation and constantly they are attend fully duration this session. Thank you so much. Thank you everyone.
Yes. Our expert, now we have one more session. So the session's expert has joined, Dr. Pathak sir. So I request the participant to introduce sir. Good afternoon, everyone. So, for this second session, we have as a resource person Dr. Suhas Pathak sir. He is the head of Department of Yoga Shastra and is an assistant professor in Department of Education, Dr. Baba Sahib Ambedkar Marathwada University, Chhatrapati Sambhaji Nagar. Sir has nearly 20 years of teaching and research experience. He is the chairman of Board of Study of Education Psychology, an academic council member, and RRC committee member in BAMU. His areas of specialization includes education psychology, research methodology, yoga education, and teacher education. Sir has 87 research publications to his credit. He has published 7 books, delivered 42 lectures, completed 8 research projects. 36 MPhil students were awarded the degree under him, and 12 PhD students have completed their thesis, and 6 are registered. Sir has presented 44 paper presentations in conferences, and also he has bagged 2 copyrights certified by Government of India. He is a UGC selected resource person for NEP 2020. He is also University Vision Committee member of Vision 2047, Viksit Bharat, and an ACT coordinator of this department. Sir, we are very privileged to have you in this session. On behalf of the organizers and on behalf of all the participants, I welcome you, sir. The floor is yours now. Thank you. थैंक यू मैम। आवाज आ रही है मैडम मेरी? Yes, Yes. sir. यस, थैंक यू। पीपीटी दिसती है? Oh, Yes, sir. It's visible. Okay. Good afternoon, everyone. Respected course coordinator, Dr. Ashkutre madam, all respected teachers who are participating in this course. Today, we are going to interact with academic leadership for professional development of teacher. So, we are going to start some basic concept which are well known to you. What is the meaning of education, then teaching, and then the role of teacher in academic leadership. So do you know the meaning of education? This is a two-way communication, not one-way traffic. So I would like to request all participants, you all are teacher, you can interact and make interested this session, please. So what is the meaning of education? Yeah, what is the purpose of education? Is education is only for degree or completing the syllabus or only for So placement? can I answer, please? Yes, please. So education is for the holistic development of a child, mind, body, and soul, as stated by Gandhi ji. आपका थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ाइए प्लीज। I said education is for the holistic development of the child. It's not just education per se, but complete development of a child, mind, body, as well as the soul of the individual. Yes, all-round development of child, right? Then any Sir, other? वर्तनामध्ये परिवर्तन करणे म्हणजे शिक्षण होय. ओके, वर्तनातील बदल आणि तो बदल अपेक्षित वर्तन बदल जो समाजासाठी आपल्याला उपयुक्त आहे. अजून? बरोबर आहे सर. थँक्यू सर. Yes. Any more? Here is near about 52, 53 participants. Sir, can I add something to this? Yes. Good afternoon, sir. Actually, when we see we are educating ourselves somewhere or the other, we want to become human beings.
It is through the manners, through the behaviors, through certain conduct and all. Because when we acquire knowledge, हम लोग जब शिक्षा मिलता है, तो शिक्षा हमेशा तो वो बुक ओरिएंटेड, वो सिलेबस ओरिएंटेड नहीं रहता है. हम शिक्षा लेते हैं तो अपने आप को डेवलप करते हैं कि समाज के हिसाब से हमें चलना है. So that is what I feel from my answer. ओके एजुकेशन हम अपने लिए भी करते हैं, समाज के लिए भी करते हैं, एज यू राइटली सेड, एंड फॉर ऑल्सो डेवलपमेंट ऑफ योर नेशन, नेशनल डेवलपमेंट के लिए भी करते हैं. बिकॉज यही जो व्यक्ति है जो एजुकेशन आपके पास से ले रहा है, वो कल जाके हमारी देश की उन्नति में वो हेल्प करेगा. राइट ओके थैंक यू ऑल टीचर्स फॉर योर रिस्पॉन्स. All the response is very correct. Now my second question is, what is the purpose of education? We know what is the meaning of education. Then what is the purpose of education? Why government gives the education for all people? For generation of employment. livelihood. Uh, that is the purpose of only higher education, not whole education. KG to PG, what is the purpose of education? Sir, Yes. छात्र के आप कोई भी लैंग्वेज में बात कर सकते हैं, मराठी, इंग्लिश, हिंदी, तीनों भी लैंग्वेज, नो इशू. छात्र के जो प्रतिभा है उसको बाहर लाने के लिए हम शिक्षा का उपयोग कर सकते हैं. हेतु क्या है? व्हाट इज द पर्पस? नॉट Sir, यूज. मैं audible? यस 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 सर. Education is a positive, visible change in the society that can be manifested through academic leadership. ओके और पर्पस ऑफ एजुकेशन इज उसमें मैडम रोल लिटरेसी. नंबर 60, आवाज बढ़ाइए आपका. सॉरी सर, पर्पस ऑफ एजुकेशन मेरे हिसाब से बेसिक लिटरेसी सिखाना. आई मीन ओके ठीक है. देन माय सेकंड क्वेश्चन, आई एम नॉट सेटिस्फाइड 100%. माय सेकंड क्वेश्चन इज, व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन एजुकेटेड एंड नॉन एजुकेटेड पीपल एज पर आवर ऑब्जेक्टिव? क्या डिफरेंस होना चाहिए दोनों के बीच में? एक पढ़ा लिखा है और दूसरा नॉन एजुकेटेड है. आप क्या उस दोनों में डिफरेंस चाहते हैं? क्या डिफरेंस होना चाहिए एक्चुअली? उसकी विचारधारा एक्चुअली होना चाहिए ना, है क्या नहीं वो छोड़ दो, एक्चुअली होना चाहिए. द थिंकिंग लेवल जो है, करेक्ट करेक्ट राइट. क्या बोले मैडम आप? थिंकिंग लेवल जो है वो Correct. एडवांस्ड होना चाहिए, साइंटिफिक Yes. होना चाहिए, That is the रैशनल main purpose of थिंकिंग. education, to motivate the thinking. आपको सोचने के लिए मोटिवेट करे. दैट इज द मेन पर्पस ऑफ एजुकेशन. और व्हाई थिंकिंग इज नेसेसरी फॉर एवरी पर्सन? क्यों सोचना जरूरी है? बिकॉज ताकि आप सही डिसीजन ले सके. यू कैन सी, करेक्ट. यू कैन एनालाइज सिचुएशंस. Yes, if your decision is proper, then your life is quality life. Improve your quality of life. That is the main motto of education. ऑल्सो आप किसी को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करते हो, आपकी खुद की एक सोच होती है. Yes, that is the symbol of educated people who are take decision on the our own. And so Uh, he becomes a my rational. yes, sir. So he becomes a rational person. He understands what is right and what is wrong for him. A rational person. मैं आप सब लोगों को थोड़ी सी एक विनती ऐसी करूंगा, मेरे रूम में ना एक फैन चालू है, तो थोड़ा आपका वॉल्यूम बढ़ाइए ताकि मुझे क्लियर सुनाए. हाँ सर, हमने मेरी बोला मेरी एक आवाज आदमी. आपको सुनाई आती है सबको? जी जी सर, आपकी हाँ आवाज आ रही है. हाँ प्लीज. So I said a person should be a rational person. A educated person, he becomes a rational one. He understands what is right, what is wrong for him. राइट. अभी देखो, हमने एजुकेशन के पर्पस भी देखा है और एजुकेशन का मीनिंग भी देखा है. देन नेक्स्ट इज टीचिंग. हम सब लोग टीचर है, हम सब लोग क्लास में जाके स्टूडेंट को टीच करते हैं, ऐसा हमें लगता है. या फिर ऐसा हम करते आ रहे हैं 21 ईयर्स, 22 ईयर्स, 30 ईयर्स, या लाइक दैट वेरियस वैरायटी होंगी उसमें. तो अभी हम लोगों को ये क्लियर हुआ है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टीचिंग. टीचिंग करना यानी क्या करना. तो क्या आप मुझे बता सकते हैं वन लाइन में कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ टीचिंग? देखो ये बहुत सिंपल चीजें हैं, मगर यही लीडरशिप खड़ा कर सकती है. अदरवाइज द टीचर डू नॉट क्लियर अबाउट दिस कंसेप्ट, देन एकेडमिक लीडरशिप कैसे हो सकती है उसमें? टीचिंग एक ऐसा, टीचिंग इज जहां आप बच्चों के दिमाग में एक क्यूरियोसिटी डेवलप करते हो, उनमें एक इच्छा डेवलप करते हो कि वो
मालूम करे चीजों को, खुद से अपना नॉलेज कंस्ट्रक्ट करे। आप फैसिलिटेटर हो। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उन्होंने क्यूरियोसिटी स्टूडेंट की डेवलप करना, बराबर है आपका, स्टूडेंट में क्यूरियोसिटी डेवलप करना ये हमारा रोल है। तो उसको टीचिंग नहीं बोल सकते हम। टीचिंग के लिए क्या करना पड़ेगा? अगर उसमें क्यूरियोसिटी डेवलप हो, वो खुद के डिसीजन खुद ले, या आप जो कुछ कंटेंट क्लास में लेके जा रहे हैं उसके बारे में स्टूडेंट सोचे, ऐसा अगर आपको लगता है तो सर व्हाट इज द रोल ऑफ टीचर बहुत सारे इन टीचिंग? टीचिंग मेथोडोलॉजीज आपको अडॉप्ट करनी होगी। एक्सपेरिमेंटेशन हो गया, एनालिसिस हो गए, केस राइट। स्टडीज हो गई। उसको आई थिंक आपको उसको वैरायटी देना पड़ेंगे अकॉर्डिंग टू टीचिंग प्लान, अकॉर्डिंग टू कंटेंट, अकॉर्डिंग टू माइंडसेट ऑफ स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू लेवल ऑफ ऑडियंस, राइट। यस, राइट। तो टीचिंग का यहाँ मतलब है टू मोटिवेट द स्टूडेंट फॉर लर्निंग। स्टूडेंट को पढ़ने के लिए आप मोटिवेट करना, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ टीचिंग, दैट इज द मेन रोल ऑफ टीचिंग, और दैट इज द एम ऑफ टीचिंग। अभी सर हम कैन आगे बी इवन, एक्सक्यूज मी सर, हम लोग ये भी बोल सकते हैं सर, अगर टीचिंग के थ्रू समवेयर और द अदर आइडिया जनरेशन भी होता है स्टूडेंट्स का, दे कम अप विद प्रोजेक्ट्स वगैरह, डिसर्टेशन, ये सब तो सबमिट करते हैं। इवन राइट। कुछ मॉडल प्रेजेंटेशन भी करते हैं एनवायरनमेंट रिलेटेड टॉपिक्स में। हम्म। तो ये तो थ्रू टीचिंग ओनली दैट दे कम अप विद द न्यू आइडियाज एंड ऑल। नहीं, हम उसको उसके लिए तो हम उसको मोटिवेट करते हैं कि डू प्रोजेक्ट प्रॉपरली, या प्रोजेक्ट करो, उसके बारे में सोचो, उसमें इनोवेशन क्या है, उसमें नया क्या है, उसमें पुराना और नया जो है नॉलेज उसको हम कैसे कंबाइन करें, उसको कैसे ज्वाइन करें, आइडिया कैसे इंटरेक्ट करें। तो दैट इज द रोल ऑफ टीचर। दैट्स वाई उसको टीचर को पता होना चाहिए कि व्हाट इज माय एक्चुअली रोल। लेसन फिनिश करना या कंटेंट फिनिश करना, दैट इज नॉट माय रोल। हाउ मेनी स्टूडेंट आर पार्टिसिपेट इन योर क्लास, how many student attendance is not important, how many participate in your class, that is more important. That's why teaching means motivate for learning. Then next is relation between education and understanding. What is the important thing in education or in classroom? Which is the most important thing in classroom? Why we teach in class? देखो, हमारे अभी जो इंटरेक्शन हम लोग कर रहे हैं उसमें आप लोगों को बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है कि आप आपके व्यूज एक्सप्रेस करें। यहाँ 20% ही मैं बात करने वाला हूँ, 80% आप ही लोग करने वाले हैं, क्योंकि हम एक मैच्योर्ड ग्रुप है। दैट्स वाई आप आपके जो भी कुछ थॉट्स है उसके बारे में एक्सप्रेस करना बहुत जरूरी है। यहाँ कोई ऐसी नहीं है कि गलत है कोई और कोई बराबर है। एवरीवन इज इक्वल। स्टार्ट प्लीज। व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन क्लासरूम टीचिंग? अभी द हम लोग तो स्टूडेंट। क्लास में जाके पढ़ाते हैं ना। स्टूडेंट सबसे इम्पोर्टेंट है। ओके, स्टूडेंट है, मान लो टीचर भी है, क्लासरूम भी है, पावर पॉइंट भी है, कंटेंट भी है। देन नेक्स्ट। द एबिलिटी टू थिंक। यस यस। द एबिलिटी टू प्लीज। थिंक। हाँ। द एबिलिटी टू थिंक, to make यस, students राइट। think, एबिलिटी टू थिंक, to यस। make और them to make them interested in the process of learning. ओके। Sir, बहुत सारे effective अभी communication. आप में से मैक्सिमम लोग तो साइकोलॉजी के, या पूरे लोग साइकोलॉजी के नहीं शायद? नहीं सर। नहीं है, अलग अलग ग्रुप के। जी तो जी। ठीक है। Yes, sir. तो अलग अलग है सर सारे, हम्म, अलग 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 है सर। ओके, वैरायटी ऑफ टीचर्स है। तो यस, ओके। तो व्हाई स्टूडेंट आर नॉट इंटरेस्टिंग इन टीचिंग? स्टूडेंट टीचिंग में कब इंटरेस्ट नहीं लेता है? जब ऐसा टीचर कब होता है? होता है कभी कभी क्लास मोनोटोनस, में ऐसा? यस, जब टीचर मोनोटोनस हो जाती है। या वो जो नॉलेज जो है वो मीनिंगफुल नहीं होता है जब हम कोशिश करते हैं हाँ। सर। और टीचर शुड भी, मीन्स हम जब पढ़ाते हैं, जब हम्म। हमको ऐसा लगता है कि वो जो नॉलेज मुझे मिल रहा है दैट इज नॉट गोइंग टू बी यूजफुल इन माय रियल लाइफ, या वो कुछ मीनिंगफुल नहीं है मेरे लिए, तो वो थोड़ा उससे डाइवर्ट हो जाता है। हो सकता है ये सेकंड स्टेज है, उससे एक बेसिक स्टेज भी है पहले, कि सपोज ही इज नॉट अंडरस्टैंड वेल। अगर राइट। उसको समझ में ही नहीं आ रहा आप क्या बता रहे हैं, तो ही इज बोरिंग इन योर क्लास, देन क्लासरूम मैनेजमेंट इज वेरी पुअर। तो हम जब क्लास में जाते हैं तो क्लासरूम मैनेजमेंट में सबसे अहम बात है कि अंडरस्टैंडिंग के ऊपर हमारा फोकस होना चाहिए, ना कि हमारा फोकस होना चाहिए कि हाउ मेनी कंटेंट्स आर कवर और नॉट। तो द अंडरस्टैंडिंग इज द बेसिक की इन टीचिंग। देन नेक्स्ट, पर्पज ऑफ एजुकेशन। पीपीटी मूव हो रही?
जी Sir, सर। can I ask a question, sir? Yes. सर आप जैसे बोले अगर उसे समझ में नहीं आ रहा है स्टूडेंट को, तो कभी-कभार स्टूडेंट इंटेलिजेंट है पर वो समझना नहीं चाहता है। ही नोज़ कि उसे पता है कि हम अकेले सब कर लेंगे। मुझे पता है सारा टॉपिक इसके ऊपर में नॉलेज है। ये भी तो होता है कभी-कभार सर कि वो इंटेलिजेंट है पर वो ध्यान नहीं देना चाहता है क्लास में। नहीं वो ठीक है ना, मगर व्हाट इज द पर्पस ऑफ टीचिंग? द पर्पस ऑफ टीचिंग इज रिलेटेड टू अंडरस्टैंडिंग। स्टूडेंट को हुँ। अंडरस्टैंड होना, ये हमारा पर्पस है। अटेंडेंस ऑफ स्टूडेंट इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर एवरी टीचर। द पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट इज इम्पोर्टेंट फॉर टीचर। दैट्स व्हाई a teacher, as a teacher, we have to focus on understanding only. ओके सर। Okay, राइट सर। right. हुँ। वो क्या करता है वो छोड़ दो, व्हाट इज माय रोल वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और हमारा रोल है कि उसको अंडरस्टैंड अगर हो रहा है तो क्यूरियोसिटी वगैरह जो मैडम ने बोला कि थिंकिंग प्रोसेस, डिसीजन मेकिंग, या फिर वो नॉलेज का यूज करना, उसको अप्लाई करना, वो तभी हो सकता है अगर अंडरस्टैंडिंग हुई तो। इफ ही इज नॉट अंडरस्टैंड वेल द कंसेप्ट, तो वो उसको यूज नहीं कर सकता, उसके एप्लीकेशन नहीं कर सकता, उसके बारे में स्किल को यूटिलाइज नहीं कर सकता। हाँ सर, एग्ज़ैक्टली मैं इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि जब टीचिंग होता है तो इट्स एन इंटरैक्शन प्रोसेस जैसे सर अभी हम लोग कर रहे हैं। माने हम लोग जब क्लास में पढ़ाते हैं तो हम लोग आई टू आई कॉन्टैक्ट देखते हैं, उसको समझ में आ रहा है या नहीं, उसको कभी-कभार उसको भी पूछते हैं कि हाउ ही रिस्पॉन्ड्स एंड ऑल। तो वो चीज़ अगर उसका इंटरेस्ट ही नहीं लगता है, वो ध्यान ही नहीं देना चाहता है, तो दैट बिकम्स डिफिकल्ट। ऐसे केसेस तो कम रहेंगे ना मैडम, हाँ, हाँ, ज्यादा हाँ, केसेस वो नहीं कम है। होंगे। एग्ज़ैक्टली हाँ, हाँ, वो कम है सर। एज पर एनपीसी ऐसे केस तो होंगे आपके क्लास में, दो चार स्लो लर्नर होंगे, चार पांच आपके बहुत टॉप इंटेलिजेंट स्टूडेंट भी होंगे, और मैक्सिमम स्टूडेंट सारे एवरेज भी होंगे। तो ठीक है, हुँ, दो चार हुँ। परसेंट केस ऐसी हो सकती है। तो उसके हाँ लिए हम सर, कुछ अलग स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं। राइट। मगर ठीक है सर, थैंक 95% यू। क्लास को तो हम क्लास में ले चल सकते हैं, राइट। और आप हाँ सब सर, लोग सोच रहे थैंक हैं यू। इसके बारे में, ये बहुत अच्छी चीज है, और आपके जो एक्सपीरियंस है वो बता रहे हैं कि यू आर वेरी सिंसियर टीचर, राइट। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। यस। देन पर्पस ऑफ एजुकेशन, तो उसमें कुछ क्वेश्चंस हमें है, उसके बारे में हम लोग सोचेंगे, इंटरेक्ट करेंगे। तो पहला तो हमने देखा है कि हम एजुकेशन क्यों देते हैं, दैट इज ब्रिंगिंग द गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ, उसके बारे में सोचे, और सोचकर अपने डिसीजन आप अच्छे ले। तो अगर खुद सोच के डिसीजन लेते हैं तो उनकी लाइफ अच्छी बन सकती है, बेटर लाइफ बन सकती है। दैट इज द मोटो बिहाइंड द एजुकेशन। देन सेकंड, whom टू टीच। अब को किसको हम पढ़ा रहे हैं इसके बारे में क्यों सोचना, whom टू टीच, तो इसके ताकि बारे में आपको, टीचर ने सोचना चाहिए या नहीं सोचना चाहिए, हम किसको यस, पढ़ा रहे हैं। यस सोचना चाहिए इससे बिकॉज क्या क्लियर हो रहा है आपको ये क्वेश्चन से? द कॉग्निटिव लेवल ऑफ द चाइल्ड करेक्ट, वो राइट। पता होना चाहिए एंड हम ऑल्सो किसको पढ़ा रहे हैं, इंडिविजुअल व्हाट इज द डिफरेंसेस, ऑडियंस लेवल, व्हाट इज द स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, व्हाट इज हिज कॉग्निटिव लेवल, ऑल्सो इंडिविजुअल व्हाट इज लर्निंग डिफरेंसेस। स्टाइल। तो इसको हमें समझ में आने आने के लिए, और ये कब, ये स्टेज हमारे इसमें कब आना चाहिए टीचिंग में? वेरी बिगनिंग। एक प्रॉपर टाइम भी आप बता सकते हैं, एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन, यस। व्हेन वी प्रिपेयर्ड। हम क्लास में जाने से पहले अगर हम प्रिपरेशन करते हैं तो तब हमें सोचना चाहिए कि हम कौन से क्लास को पढ़ा रहे हैं, और उसकी ऑडियंस लेवल क्या है, उनका लास्ट एक्सपीरियंस, लर्निंग एक्सपीरियंस क्या है। तो ये वो वहाँ क्वेश्चन है। एंड देन नेक्स्ट इज वेयर, वेयर टू टीच। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? वेयर टू टीच मीन्स, सर एम्बियंस कहीं भी पढ़ा सकते हो। वेयर टू टीच मीन्स, इट मीन्स आपको उनको कहाँ पढ़ाना है वो हिसाब से आपको क्लासरूम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। इफ यू आर गोइंग टू ऑनलाइन और ऑफलाइन, और इन क्लास और इन लैब और ऑन द ग्राउंड, आप उनको कहाँ फील्ड ट्रिप में पढ़ा रहे हैं, कहाँ पढ़ा रहे हैं, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, बिकॉज यू हैव टू अरेंज द गुड एक्सपीरियंस, एग्जाम्पल, नॉलेज। उसकी जो आपको अरेंजमेंट करना है टीचिंग के लिए, इसलिए आपको उनको कहाँ पढ़ाना है, कौन सा प्लेस है पढ़ाने के लिए, उसके बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि यू हैव टू अरेंज परफेक्टली। देन व्हेन टू टीच, देन टाइम, कौन सा टाइम है जब उनको पढ़ाना चाहिए। इससे आपको क्या समझ में आ रहा है? व्हेन टू टीच मीन्स which is right time for teaching and learning.
Sir, when students are motivated. राइट। और जब स्टूडेंट मोटिवेटेड है तो वो राइट टाइम पढ़ाने का, जैसे कि जब बारिश का दिन होता है तो हमारे जो फार्मर्स है वो फसल लगाते हैं, तो वैसे ही जब स्टूडेंट मोटिवेटेड है तब हम उनको पढ़ा सकते हैं, राइट। और दो आंसर बाकी है उसके। एक सर ने दिया है, दो के बारे में सोचो। आप लोग ज्यादा बोर हो रहे हैं या थोड़े बोर हो रहे हैं? वेन टू टीच मीन्स हिज फिजिकल एंड मेंटल स्टेट। स्टूडेंट जो हमारे क्लास में बैठा है वो मेंटली फिजिकली हमारे क्लास में है, मेंटली भी हमारे क्लास में होना बहुत जरूरी है। तो वो सिचुएशन आपको क्रिएट करना पड़ेगी थ्रू योर टीचिंग। एंड लास्ट इज हाउ टू टीच, उसको कैसे पढ़ाए। यहाँ क्या आंसर है आपका, कैसे पढ़ाना चाहिए उनको, जा तो कि एजुकेशन उनको प्रॉपर मिले। हाउ टू टीच, कैसे पढ़ाया जाए। यस, आप सब लोग पढ़ाते हैं उनको, कैसे पढ़ाते हैं Sir, आप लोग? यस। sir, sir, students' learning should be meaningful and interesting and यस, purposeful लर्निंग also. लर्निंग टीचिंग प्रोसेस मीनिंगफुल होने के लिए Teach the way क्या the करना चाहिए? student wants to learn. Right pedagogy. ओके। So teach the students the way they want to learn and not how you want to teach. ओके। हाउ टू टीच मीन्स आपका जो कंटेंट है वो कंटेंट एनालिसिस करने के बाद कौन सा कंटेंट के लिए कौन सा टूल परफेक्ट है, वो हिसाब से हमने टूल को सिलेक्ट करना चाहिए। टूल मीन्स पीपीटी रहो, आपके लेक्चर मेथड रहो, क्वेश्चन आंसरिंग मेथड रहो, एक्सप्लेनेशन मेथड रहो, या एग्जाम्पल्स आप उनको देके पढ़ाने वाले, या कैसे आप उनको पढ़ाने वाले हैं, वो बहुत डिपेंड करता है। तो इसलिए आपको सोचना पड़ेगा हम किसको पढ़ा रहे हैं और हम उनको क्या पढ़ा रहे हैं, कौन सा कंटेंट हम उनको डिलीवर कर रहे हैं। ये दो चीजें यहाँ अहम है डिसीजन लेने के लिए कि कैसा पढ़ाना चाहिए। ओके, देन नेक्स्ट इज फैक्टर्स अफेक्ट ऑन लर्निंग। कौन से फैक्टर्स लर्निंग के लिए अफेक्ट करते हैं? तो दैट इज थ्री फैक्टर्स। फर्स्ट इज लर्नर, खुद लर्नर, उसके इंटरनेशनल फैक्टर्स उसके ऊपर अफेक्ट करते हैं। सेकंड टीचर, इफ टीचर इज इन मूड और नॉट इन मूड, एंड दोनों मिलके बनाते हैं लर्निंग एनवायरनमेंट। तो ये फैक्टर्स उसके ऊपर बहुत अहम करते हैं। इसके अलावा भी कुछ फैक्टर्स है जो यहाँ लिखे नहीं है, वो भी टीचर के सॉरी सॉरी स्टूडेंट के लर्निंग के ऊपर इफेक्ट करते हैं। तो कौन से आप बता सकते हैं? कौन से कुछ सब फैक्टर्स यहाँ हमने लिखे नहीं है, वो भी लर्निंग में इफेक्ट करते हैं स्टूडेंट के, विचार दे। Sir, मानसिक स्थिति. यस, मेंटल पोजीशन ऑफ स्टूडेंट, दैट इज लर्नर, उसमें कवर हो गया वो। और कोई इंटरवेइंग वेरिएबल्स है वो भी उसके ऊपर इफेक्ट करते हैं। यस प्लीज। फैमिली बैकग्राउंड उसका, या कुछ उसको मोटिवेशन मिले, उसको कुछ प्राइज मिले, या कुछ उसको पनिशमेंट मिले, अगर वो डिक्लेयर हो गया प्राइज पनिशमेंट, तो ये फैक्टर कोई इंडिविजुअल के ऊपर इफेक्ट कर सकता है, क्योंकि एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। तो इसीलिए हम टीचर कोशिश करता है कि सब बच्चों के एक प्लेटफॉर्म के लेके टीचिंग करे, मगर ये फैक्टर्स जो है वो क्या करते हैं, वो इफेक्ट कर सकते हैं, उनके फ्रेंड्स, उनके कुछ हैबिट्स, ये भी इफेक्ट कर सकता है। देन दिस इज फॉर टीचर, एनर्जी मैनेजमेंट ऑफ टीचर। हाउ मेनी टीचर्स थिंक अबाउट दिस टेबल? इसके पहले आप में से किस कौन कौन से टीचर ने इसके बारे में सोचा है? आपको मालूम है ये, इसके पहले आपने कभी इसका प्लान किया है?
आपने बोला ना कि इफ क्यूरियोसिटी इज इन क्लास देन स्टूडेंट ध्यान देंगे, स्टूडेंट इज इंटरेस्ट इन क्लास। इफ क्लास में अगर कुछ नया हो रहा है, कुछ इनोवेटिव हो रहा है और उसकी क्यूरियोसिटी अगर मेंटेन हम कर रहे हैं, तो स्टूडेंट लुक आफ्टर टू टीचर व्हाट इज गोइंग इन क्लास। तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा एनर्जी मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है। तो उसमें क्या हो रहा है कि हम एज ए टीचर बोल के हमें बहुत सारे काम रहते हैं जो हमें डेली करना पड़ते हैं। उसमें हमारी आज की डेट में मेरे हिसाब से, अगर हर किसी का एक्सपीरियंस अलग अलग हो सकता है, एज पर माई नॉलेज 70% एनर्जी इज यूज फॉर आवर डेली वर्क। देन 20% एनर्जी जो है, जो भी हमें सर्कुलर्स आए हैं या फिर कुछ हमारे प्रिंसिपल या हमारे हायर अथॉरिटी से हमें कुछ मिले हैं सजेशंस, उसके लिए हम काम करना पड़ता है। और ओनली 10% हम कुछ क्रिएटिव वर्क करते हैं डेली। डू यू एग्री विथ मी? मेरी आवाज आ रही है ना आप सबको? हेलो, Yes, sir. Yes, आवाज sir. आ रही You है? are audible. Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके। तो इसको हमें शिफ्ट करना है, इसको अगर हमें चेंज करना है, अगर हमें क्रिएटिव टाइम के लिए या इनोवेटिव के लिए मैक्सिमम टाइम अगर निकालना है, तो हमने क्या करना चाहिए टीचर ने? अगर हमारा मैक्सिमम टाइम अगर डेली वर्क में, रूटीन वर्क में अगर यूटिलाइज हो रहा है और हमें क्रिएटिव वर्क के लिए बहुत कम टाइम मिल रहा है, उसके लिए सोचना पड़ता है ना, क्रिएटिव वर्क के लिए कुछ टीम वर्क करना पड़ता है, सोचना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, और उसके लिए अगर हमें टाइम कम मिल रहा है, तो व्हाट वी डू फॉर दिस 90% के लिए हमें क्या करना चाहिए? कुछ बता सकते हैं आप एक आधा एग्जाम्पल इसके बारे में, कि ये काम ये हमें डेली करना पड़ता है, मगर हमने अगर ये ऐसा कुछ किया तो वो टाइम हमारा सेव हो सकता है। व्हाट वी डू Sir, एज ए टीचर? sir, we have to excel in time management. टाइम मैनेजमेंट, ओके। और We have to give यस, priority also. We have to give priority, importance. What is important to be यस, finished? इम्पोर्टेंट एंड अर्जेंट एंड Which, इम्पोर्टेंस आपको yeah, पहचान के which, काम करना पड़ेगा, राइट? टाइम प्लान, गुड। और पुराने जमाने में लेडीज क्या करती थी, सब कपड़े वगैरह धोना, वॉशिंग वगैरह घर पे खुद ही करते। पानी भरना, वॉशिंग करना, कुकिंग करना, तीन ही काम थे उनको। अभी तो मोस्ट ऑफ द लेडीज आर, वो अभी जॉब भी करते हैं और घर का सब काम भी करते हैं, मगर घर का काम के लिए उन्होंने क्या किया है, दे हैव डेवलप सम सिस्टम लाइक दैट, वॉशिंग मशीन और रोटी मेकर और लाइक दैट। तो उन्होंने क्या किया, वो सिस्टम बनाया है, सिस्टम डेवलप किया है, जिससे उनका रूटीन वर्क हो जाता है और उनको जॉब के लिए भी टाइम फ्री मिल जाता है। वैसे हम जब डेली काम करते हैं, तो अगर हमें अटेंडेंस देने का काम है, हमारे क्लास में 100 स्टूडेंट्स है और हम डेली जाके उनकी अटेंडेंस ले रहे, उसमें हमारे अगर अच्छी एनर्जी 20% एनर्जी अगर वेस्ट हो रही है, तो वी हैव टू मेक अ सिस्टम फॉर अटेंडेंस। कुछ सिस्टम उसके लिए बनाओ जो कि स्टूडेंट खुद आके अटेंड करे और उससे कैप्चर हो जाए ही इज अटेंड और नॉट, और उससे हमारी एनर्जी सेविंग हो जाए और उसको हम क्रिएटिव वर्क में लगा दें। तो डेवलप अ सिस्टम एज पर योर डेली रूटीन एंड अडॉप्ट दिस सिस्टम्स, और वो सिस्टम को आप क्या करो, आपके डेली वर्क में लाओ, उसका उपयोजन करो, एंड देन यू हैव टू फ्री फॉर क्रिएटिव वर्क। ओके, डू यू अंडरस्टैंड हाउ यू कैन मैनेज योर एनर्जी? yes, sir. आगे जाना, आगे जाना है? Yes, sir. यस, ओके। जो कि कुछ चीजें हैं जो टीचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अहम रखते हैं। The first is the preparation of teacher. When you enter the class, before enter the class, आपको टीचर के लिए प्रिपरेशन बहुत जरूरी है। कौन से टाइप का प्रिपरेशन टीचर के लिए जरूरी है? विच टाइप ऑफ प्रिपरेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एवरी टीचर? Mental preparation. यस, राइट सर। मेंटली यू आर रेडी फॉर टीचिंग, और मेंटली यू आर रेडी फॉर इंटरेक्ट विद स्टूडेंट। इफ यू आर मेंटली नॉट रेडी, तो कुछ काम नहीं हो क्लास में जाके। स्टूडेंट आपका लॉन्ग फेस नहीं देखना चाहता है, वो आपका स्माइली फेस देखना चाहता है। दैट्स व्हाई यू हैव टू मेंटल प्रिपेयर। गुड, राइट सर। नेक्स्ट, और
सर हमारा जो भी कंटेंट पढ़ाना है उसका ईयर प्लान और यूनिट प्लान के हिसाब से जो है हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उस ऑब्जेक्टिव्स के लिए हम लोगों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपीरियंसेस कौन से देने हैं, उस हिसाब से हमारा जो भी ई कंटेंट है या फिर जो भी हम लोगों की तैयारी है वो पूरी होनी चाहिए। और बच्चे कौन से क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो भी तैयारी होनी चाहिए। बिल्कुल सही है। सेकंड प्रिपरेशन इज कंटेंट प्रिपरेशन, राइट। कंटेंट यस। प्रिपरेशन में हम ये देखें कि हमें क्या पढ़ाना है, हम उसको कैसे पढ़ाने वाले हैं, किसको पढ़ाने वाले हैं, और व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव, हम वो क्यों पढ़ा रहे हैं उनको। और मैडम ने बोला है उसको ऑब्जेक्टिव वगैरह, उसमें हम एक छोटी चीज ऐड करते, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड आउटकम्स। वो आपका क्लास होने के बाद, जैसे आप ईयरली प्लान करते हैं, 6 मंथली प्लान करते हैं, सेमेस्टर वाइज प्लान करते हैं, मंथली प्लान करते हैं, वैसा डेली प्लान करो, दैट इज DTR, डेली टीचिंग रिपोर्ट। DTR बनाओ आप खुद का, लगे तो आप उसको ऑनलाइन भी रख सकते हैं DTR। उसमें प्लान करो कि आप आज क्या पढ़ाने वाले हैं और आपको क्या आउटकम की अपेक्षा है। उससे आपका बड़ा मोटिव भी फिर पॉसिबल हो सकता है। तो DTR में उसको डाल दो, डेली प्लान में। अगर हम क्लास में जाके आज समझ मान लो कि पर्सनैलिटी के हम मीनिंग बच्चों को पढ़ा रहे हैं, मीनिंग, स्कोप एंड लिमिटेशन ऑफ पर्सनैलिटी, तो एटलीस्ट आपको स्टूडेंट की तरफ से होना समझ में आना चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पर्सनैलिटी। स्टूडेंट स्पीक इन इज ओन वे, इन इज ओन लैंग्वेज, कि व्यक्तिमत्व यानी क्या है, और मैं मेरा व्यक्तिमत्व विकसित करने के लिए क्या 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 कर सकता हूँ, और मेरे सेल्फ डायरी में मैं क्या क्या लिखूंगा कल से, कि जिससे मेरा कंसंट्रेशन फोकस हो, कि मेरी खुद की व्यक्तिमत्व का विकास हो। तो दैट इज कंटेंट प्रिपरेशन। कंटेंट को एनालाइज करो, उसको कैसे पढ़ाना है। और एट द टाइम ऑफ कंटेंट प्रिपरेशन हमें क्या ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, विच थिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एट द टाइम ऑफ कंटेंट प्रिपरेशन फॉर एवरी टीचर। क्या ध्यान में रहना चाहिए हमारे। यस प्लीज। एट द टाइम ऑफ कंटेंट प्रिपरेशन हमारे ध्यान में क्या होना चाहिए। हम ये कंटेंट प्रिपरेशन बच्चे के सामने नहीं करते, उनके पहले करते, बिफोर द क्लासरूम। तो क्या हमने ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कंटेंट प्रिपरेशन के लिए। सर इफेक्टिवली कंटेंट कैसे समझाना है? हाँ, उस बराबर है। उसके लिए क्या ध्यान में हमने किसके ऊपर फोकस करना चाहिए, क्या हमने कंसंट्रेशन करना बहुत जरूरी है एट द टाइम ऑफ कंटेंट प्रिपरेशन। योर आंसर इज 50% करेक्ट। उसको 100% कन्वर्ट करो। सर किस तरीके से पढ़ाना है, क्या टूल यूज करना है जिससे राइट। इफेक्टिव हाँ, बच्चे को आप समझ टूल में यूज आए? कौन सा करना है, आप सिलेक्शन कैसे करेंगे टूल का। सपोज यू हैव टू सेलेक्ट PPT, पावर पॉइंट ने आपको सेलेक्ट किया, या PPT यूज करके पढ़ाने वाले हैं, तो PPT कैसी होना चाहिए, ये किसके ऊपर डिपेंड रहेगा। सर पर अगर कोई स्ट्रक्चर समझाना है तो डायग्राम उस पे होना चाहिए। ओके। एक चीज हम लोग मिस कर रहे हैं, लेवल ऑफ ऑडियंस। अगर आपको सेकंड क्लास को पढ़ाना है मदर नाम की पोएम, तो वो अलग से पढ़ाना पड़ेगा। वही पोएम आप 7th क्लास को भी पढ़ा सकते हैं। लेवल ऑफ ऑडियंस चेंज हो गई, आपका पढ़ाने का टेक्निक चेंज हो जाएगा। वही पोएम आप ग्रेजुएशन के बच्चे को भी पढ़ा सकते हैं, BA के बच्चे को, कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ मदर। मगर आपका जो टीचिंग टेक्निक है, जो प्रिपरेशन टेक्निक है, वो चेंज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू लेवल ऑफ ऑडियंस। क्या आप लोग इसको मानते हैं कि ये चेंज करना जरूरी है। यस सर। यस। आप UG को पढ़ा रहे हैं, आप PG को पढ़ा रहे हैं, आप PhD के स्टूडेंट को गाइडेंस कर रहे हैं, या आप 11th 12th के जूनियर स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं, या आप स्कूल के लेवल में कुछ लेक्चर ले रहे हैं, तो आपका जो कंटेंट प्रिपरेशन है वो टाइम आपने सोचना चाहिए कि हम किसको पढ़ाने वाले हैं ये कंटेंट। तो दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। देन थर्ड प्रिपरेशन इज फिजिकल प्रिपरेशन। फिजिकल प्रिपरेशन में क्या होना चाहिए, विच थिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन फिजिकल प्रिपरेशन। कोई टीचर जब क्लास में जाता है तो एक एनर्जी क्लास में जाती है, एनर्जी लेके टीचर क्लास में जाता है। नए एक पहले टीचर बाहर चले गए, दूसरे टीचर एंटर हो गए, तो स्टूडेंट को बहुत खुशी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अगर लेक्चर चेंज हो गया, पहला खत्म हुआ दूसरे वाला चालू हो गया,
तो स्टूडेंट को छोटी इंटरवल मिल जाती है कुछ सेकंड और कुछ मिनट्स की, और दूसरे टीचर क्लास में एंटर होते हैं। व्हेन द न्यू टीचर इज एंटर द क्लास इन क्लास, तो स्टूडेंट को खुशी होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। आपको क्या लगता है? Definitely, sir. You're right. यस, होना चाहिए। आप सब लोग बात नहीं कर रहे, इसका मतलब बाकी लोग नॉट एक्टिव इन पार्टिसिपेशन, आपका नहीं है, तो ये अच्छी चीज नहीं है। रोल नंबर 71, 81, ये 2-3 लोग ही जवाब दे रहे हैं। Sir, और we are बाकी listening carefully, sir. हाँ, We are listening carefully, sir. listening, sir. बाकी लोग नहीं कर रहे, क्या बात है? Sir, we are there, sir. We are listening to you, sir. No, but we are required to your participation. Yes, sir. Yes, we are already there, sir. No problem. ओके, तो इसमें आपको फिजिकल प्रिपरेशन ऑफ टीचर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। फिजिकली प्रिपेयर टीचर की इसमें बहुत एनर्जी होके क्लास पे जाना चाहिए, तो ही स्टूडेंट की कुछ क्यूरियोसिटी रहेंगी कि आज कुछ अलग हमें मिलने वाला है। तो दैट्स व्हाई द फिजिकल प्रिपरेशन ऑफ टीचर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। देन नेक्स्ट इज परफेक्शन। हम हमारे टीचिंग में, इफ वी आर द leader in our class, we are the owner of our class, we have all type of freedom in our classroom, so we are responsible for the perfection of our content. Do you agree with me or not? Yes, sir. yes. तो हमने हमारे कंटेंट में परफेक्शन लाने के लिए एज ए टीचर क्या करना जरूरी है? व्हाट इज द रिक्वायर्ड टू? Sir, first of all, that we should go before going to the part class. Actually, we should we should clear about the part concept. Whatever the one you're teaching, that you should be very thoroughly. That you should prepare some teaching material that or teaching aid should have to taken, and that just you should expect that the questions may be part asked by the student from the different angle. So you should prepare your teaching or the class notes in such a way that you can face the part actually the all type of questions, absurd questions from the student. So that because student you should think there are part 60 or 80 students are there, they can ask the part different angle questions. So accordingly, you should thoroughly prepare the questions, and also if it is possible, that is you can show also some physical actually illustration or some case studies like that actually. Okay. When we enter in the class, Sir, yes, we ma'am. should prepare lesson plans and class diaries accordingly to manage our time properly. Then ओके, we जैसे should. आपने प्लान किया वैसे प्लान आप एग्जीक्यूट करने की कोशिश करना चाहिए, राइट? हाँ सर, हम कर यस, रहे हैं। राइट। और सर after evaluation, during evaluation also, we should have divided evaluation process. Like we should take class tests and quiz tests of the students. Then we should also involve them in the class for interaction, and we should solve their doubts, and we should see that what in which modules they have particularly doubts, and we should concentrate on them. Then after the evaluation process is over, we should take into account the course outcomes, what actually we have given and what actually they have learned. We should quantify it. कुछ टीचर क्लास में जाने के बाद नया टॉपिक बोर्ड पे लिखते हैं या पीपीटी भी बताते हैं और स्टूडेंट को क्वेश्चंस करते हैं। आप करते Sir, हैं कभी? basically, when I am going to the part classes, so when you are teaching one subject, if there is recall back or that you are correlating the part your teaching subject with other, then I am just basically express the part the new ideas or the new directions to the student, and they may also part interact by asking the questions in that direction also. That I am doing in my classes actually. Experiential learning. Okay, my experiential learning is important, sir, because our teaching is only classroom teaching. But when we teach to student, then student not like
उनको ऐसा लगना चाहिए कि नहीं कि क्लासरूम टीचिंग है, उनको भी एक एक्सपीरियंशियल लर्निंग होना Sir, चाहिए। please unmute. Those are talking, sir. Noise is coming. Actually, it's not audible clearly, sir. 47 नंबर प्लीज अनम्यूट। हाँ सर, एक्सपीरियंशियल लर्निंग इज इम्पोर्टेंट। जब हम क्लासरूम में बच्चों को पढ़ाते हैं तो उनको ऐसा लगना नहीं चाहिए कि हमारा टीचिंग करने का ये सिर्फ क्लासरूम के ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारा टीचिंग का समाज के लिए कितना इम्पोर्टेंस है ये फील होना चाहिए सर स्टूडेंट को, ऐसे मुझे लगता है। ओके ठीक है। देखो हम कभी कभी क्लास में जाने के बाद कुछ टीचर्स टाइटल लिखते हैं और स्टूडेंट को कुछ क्वेश्चंस करते हैं, तो चेक द प्रीवियस नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट अबाउट द पर्टिकुलर सब्जेक्ट। जो नया टॉपिक्स आप डील करने क्लास में जा रहे हैं उसके Yes, बारे sir. में प्रीवियस। सर रोल नंबर 47 को म्यूट करो ना, कोई तो भी होगा तो पोस्ट। रोल नंबर 47 प्लीज। उनका माइक चालू है और वो थोड़ा सा उनका बातें चालू है। त्यांचं लक्ष नाही ते ये माईक ऑन झाला वाटतं. सर डायरेक्ट मंत्र्यांशी संबंध येतो म्हणजे थेट सचिव वगैरे. गौरव या अमर प्लीज 47 को क्लोज करो। एक वर्ष पूर्णपणे सगळ्या त्या सिस्टम मध्ये सर ते खूप भव्य आहे हो सो आईचं मी जाऊन आलो सर. हो सर आप भी उनको म्यूट कर सकते हैं सर। को होस्ट कोई भी होगा तो उनको म्यूट कर सकते हैं। हाँ हाँ। रोल नंबर 47 आपका आवाज आ रही है प्लीज। रोल नंबर 47 तुमचा आवाज येतोय। अमोल सर आप खुद म्यूट कर दीजिए ना सर। आणि विशेष म्हणजे स्वर्गीय यशवंतराव चव्हाण लक्ष्मणराव शास्त्री आणि आपले राजेंद्र बाबू हो. तिथं वावरलेले ठीक है, मैं अमोल को कॉल करके बताता हूँ। नाही सर तो बाहेर पडला चांगला झालं, म्हणजे बाहेरही पडला आणि ते झालं म्हणजे चांगलं झालं. ते पाठबळ होतं सर. नाही सरांचं 100% सरांचं पाठबळ आणि सरांचा पाठबळ होता येतो तर लोकांना. आणि सरांची काय भूमिका आहे की होतकरू पोरगा चांगलं काम करतो त्याला संधी दिली पाहिजे. मग मॅगझिन आपण हेलो आपल्याला 47 के आपके पास किसी के पास? यस Sir, I have his phone number. I will call him and tell sir. अरे ते 47 ला म्यूट कर रहे थे, कोणतरी 47 ला I didn't have his mobile number. I was trying to search for the number. मार्ग बनायचे निघून गेला तेव्हा सगळी सगळे मार्ग भरून गेलो. मग ते काय तसं का आहे ना ते मार्ग शिवाय ओके केलं सर. यस थँक्यू. परफेक्शन म्हणजे काय की आपण स्टुडंटला काही प्री क्वेश्चन्स विचारले, त्याचं प्रिव्हियस नॉलेज बघितलं, देन विच कंटेंट वी आर गोइंग टू डिलिव्हर. अकॉर्डिंग टू कंटेंट वी हॅव टू सिलेक्ट learning experiences for the students, and then after teaching we have to check what is the outcomes. These outcomes we can measure through some questions or through some dialogue or through some interaction. So that is the perfection in our teaching. That is time management, content preparation. ये तो सब इसके लिए important है, मगर ये भी बहुत अहम है कि स्टूडेंट का प्रीवियस नॉलेज क्या है. देन प्लेजर्स. टीचिंग में टीचर को और स्टूडेंट को खुशी आना चाहिए. हैप्पीनेस ऑफ द क्लास इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हेन यू टीच इन क्लास. तो आप जब क्लास में पढ़ाते हैं तब जब स्टूडेंट को अंडरस्टैंड होता है, व्हेन ही अंडरस्टैंड योर कंसेप्ट, एट दैट टाइम ही इज सेटिस्फाइड एंड ही इज हैप्पी.
तो ये बहुत जरूरी है कि आप जब क्लास में जाए तो यू कैन मेजर द फेस ऑफ स्टूडेंट्स और यू कैन सी द बॉडी लैंग्वेज ऑफ स्टूडेंट, और आपको समझ में आता है कि आप जो पढ़ा रहे हैं क्लास में वो स्टूडेंट को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो प्लेजर क्रिएट करना क्लासरूम मैनेजमेंट में ये हमारा अहम भूमिका है टीचर की। तो इसलिए हाउ वी कैन क्रिएट द प्लेजर, हाउ वी कैन सेटिस्फाई द स्टूडेंट्स प्रॉब्लम्स, हाउ वी कैन सेटिस्फाई द concept, how we can understand the concept to student. तो दैट इज द रोल ऑफ टीचर। तो टीचर हैव टू थिंक कि अगर जो कोई कंसेप्ट हम अगर क्लास में ले जा रहे हैं तो स्टूडेंट तभी पढ़ेंगे जब उनको पता चलेगा कि ये कंसेप्ट मेरे लिए क्या काम की है, व्हाट इज द यूज दिस कंसेप्ट इन माय लाइफ। और जो हमारा नॉलेज है, जो हम क्लास में टेक्स्ट बुक थ्रू ले जाते हैं और पावर पॉइंट थ्रू ले जाते हैं, वो नॉलेज को जो हमारी डेली लाइफ है, लाइफ एजुकेशन जो है, उसको हम जब तक ज्वाइन नहीं करेंगे तब तक स्टूडेंट को इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो स्टूडेंट को इंटरेस्ट क्रिएट करना, दैट इज ड्यूटी ऑफ टीचर, दैट इज द रोल ऑफ टीचर, दैट्स वाई। तो क्लास में प्लेजर तभी रहेगा जब 100% स्टूडेंट को अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएंगी, तो क्लास विल बी सेटिस्फाइड एंड प्लेजर। तो इसके लिए हर टीचर ने अपने अपने एबिलिटी के हिसाब से कोशिश करना इसके लिए बहुत जरूरी है। देन प्रेजेंटेशन, how you make your presentation more and more effective. What is an idea for developing your presentation more effective? Do you tell me, anyone? आप आपका प्रेजेंटेशन कैसे इफेक्टिवली बना सकते हैं? So we can include videos, short videos, or images which can connect them. But what we are contain, what we are going to teach them by showing it in small Yes, videos or images. all the softwares and tools, very different type of tools are available for teacher. That is one part. Then second part is, that is the main part. All Sir, the we yes, can ma'am. have quizzes like games. You can take quizzes, right? Like games, we can make them play and kind of puzzles we can give them on the subject, which will have a good interaction. Okay, nice. Then we can have blended learning methods, sir. Right. Like we can have a video and ask them like what you have learned from that, or give a summary of that. Correct. So we will get different ideas from that. Very nice. Not only This that, is their sir. concept. Here, So adding to, not only Yes. that, only adding to that, madam's actually suggestion, sir, you can put some questions in such way that the student has to be think, because while they can be go for the part teaching the process of your presentation, so put some question mark in somewhere that are incomplete, so that the IQ can be also part enhanced by thinking the part what the teacher is actually asking. Second thing is part just has to give the part some of the part models relating to your part teaching, so that not only the part they can go for the acquire the knowledge, rather they can go for actually for opportunity to just to innovate something actually. So if you can do such a just like a part research and innovation in your teacher, in your teaching also, you can give both the knowledge and also opportunity to just to deliver by them also, and also give the plenty of opportunity to them so that they can present their ideas. So that is your right, part interactive learning right. that we can see. That's like why we that's have why we that's why sometime open book exam is most important things. yes, sir. Yes, So Sir, student have to we some have freedom in our to refer huh, the n type of books, read n type of books, and develop their idea and present their self in a good manner way. And most important thing is 100% students is participated in your class. That is the best presentation. और सब बच्चे आपके क्लास में कब इंटरेस्ट लेंगे, कब आपके क्लास में इन्वॉल्व हो जाएंगे? व्हेन यू आर इन्वॉल्विंग ऑल स्टूडेंट्स, यू आर गिविंग द अपॉर्चुनिटी टू ऑल स्टूडेंट्स। इसलिए स्टूडेंट को इंटरेक्शन करना बहुत जरूरी है। आपने मेरे को 100 रुपए दिए, मैंने आप लोगों को 100 रुपए दिए, तो बैलेंस इज नॉट इंक्रीजिंग। बट यू हैव गिव मी वन आइडिया, आई हैव गिव मी यू वन आइडिया, then our both ideas will be double. That's why the interaction in class is most important thing. First thing, interaction. Second thing, ask questions. There are three type of question. Do you know three type of question? There is lower order, middle order,
and higher order. Lower order means very easy questions, only the based on information. Every student can give answer. The students who are not speaking in your class, never speaking in your class, you can ask the question this type of students. The very easy questions. Where will you? What is the position of our India? वगैरह. That's easy questions. Then some questions are middle order questions. Middle order questions में compare कर सकते हैं हम एक दूसरे को, thinking करके बोलना पड़ता है. That is middle order question. And higher order question is for higher IQ students, जिनको लगता है कि मुझे बहुत कुछ आता है, उनको भी कुछ चैलेंज होना बहुत जरूरी है हर सब्जेक्ट में. तो क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन आप कैसे करते हैं, दैट इज योर प्रेजेंटेशन आल्सो. आप एग्जाम्पल क्लास में कैसे बताते हैं वो भी बहुत जरूरी है. कि आप हम जब क्लास में एग्जाम्पल बोलते हैं, यार टीचर इज वेरी इन्वॉल्व इन हिज रोल, at that time your presentation is definitely effective. The language of teacher, pauses of teacher, then the audience level, the examples are in our daily life or not, related to daily life or not. These all things are very important to make our presentation more and more effective. It means summary of this point is, if 100% students are involved in your teaching very energetically, then your presentation is successful. If your PowerPoint is very nice, you have used n number of colors and background and animations, वगैरह वगैरह, but students are not involved in your class. So only attend the class. That is not important. So that's why you have to focus the presentation. Then next, प्रेजेंस ऑफ माइंड. इसके बारे में बहुत लोगों के गलत समझ है, गलतियां है, मिसकंसेप्ट है कि प्रेजेंस ऑफ माइंड मींस जो चैलेंज आएगा उसको हम कैसे भी फेस करेंगे और वो टाइम निकाल लेंगे. दैट इज नॉट प्रेजेंस ऑफ माइंड्स. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रेजेंस ऑफ माइंड्स इन आवर क्लास? Accept the truth, accept the fact, and give answer, and satisfied your students. When you enter the class, if 20 students are sitting in the class, it means not 20 students. There is a 20 challenges in front of the teacher. That's why presence of mind of teacher is most important thing. Presence of mind is depend on how is your teaching experience, learning experience, if teacher is upgrade or not. All these things are most important for presence of mind. ये नहीं है कि हम क्लास में जाए और स्टूडेंट ने कुछ तो पूछे और उसको ओवरटेक ना करने के लिए हम उसको कुछ भी जवाब दें और उसको नीचे बिठाए और आपके हाथ में उसके कुछ प्रैक्टिकल के मार्क्स इसके लिए. दैट इज नॉट प्रेजेंस ऑफ माइंड. दैट इज द मिसकंसेप्ट अबाउट द प्रेजेंस ऑफ माइंड. राइट कंसेप्ट इज एक्सेप्ट द फैक्ट, accept the truth, accept the challenge, and satisfied your student in systematic way. That is the presence of mind. तो ये सब चीज टीचर्स ने उसके बारे में सोचना बहुत जरूरी है. देन प्रोफेशनल. टीचर ने प्रोफेशनल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? रोल नंबर 55. 55, रोल नंबर 55. शायद वो सिर्फ ज्वाइन है, क्लास में नहीं है. यस, आप भी कोई बता सकते हैं. हमने टीचर्स कम्युनिटी ने प्रोफेशनल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए यस सर. सर, यस सर, होना चाहिए प्रोफेशनल सुहास. तो जरूरी है. अगर हम प्रोफेशनल हो गए समझो, या प्रोफेशनल हम लोग है, तो किस टाइप के बेनिफिट हमारे स्टूडेंट को मिलेंगे? न्यू रिसर्च एंड इनोवेशन सर. यस ठीक सर. है. न्यू रिसर्च एंड इनोवेशन बिकॉज आवर प्रोफेशनल सेज टू अस. सर वो सब तो बात नए की ट्रेंड बात है सर. स्टूडेंट तक पहुंचाएंगे. प्रोफेशनलिज्म वो पहले सीखेंगे, ह्यूमन वैल्यूज पहले सीखेंगे, उसके बाद वो सब सीखेंगे. हम लोग जैसे एक्ट हमारे करेंगे. टीचिंग प्रोफेशन के कुछ कोड ऑफ कंडक्ट से, कुछ इथिक्स यस से, उसको हम फॉलो यस. करेंगे. हाँ. राइट. यस. यस. और मान लो हम और प्रोफेशनल बन गए तो उससे क्या होगा? विच टाइप ऑफ चेंज? प्रोफेशनल अगर टीचर बन गए तो
हैबिट्स ऑफ टीचर्स। और स्टूडेंट क्या करते हैं? स्टूडेंट्स लर्न We, फ्रॉम टीचर। sir, स्टूडेंट की we can हाँ, inculcate good values in them. Then we राइट। can inculcate good body language and communication skills. Then we can also give them proper instructions about uh, doing how to act in any situation. ओके, सेकंड साइड हम समझने की कोशिश करेंगे। इफ हम वी आर नॉट प्रोफेशनल, तो व्हाट हैपन इन क्लास, व्हाट हैपन इन कॉलेज और यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट, क्या होता है अगर यू आर नॉट प्रोफेशनल? तो व्हाट हैपन? Then it will be a chaos, sir, because we cannot handle the students in a proper manner, and we will show our emotions, which we should handle their emotions. We are not there to handle like mishandle our emotions. That will be वैल्यूज, unprofessional. Yes, sir. वैल्यूज, इथिक्स, संस्कार, ये सब बारे में हम बहुत पीछे रह जाएंगे इफ वी आर नॉट प्रोफेशनल। Yes, sir. अगर हम 10 मिनट क्लास में लेट जाते हैं, देखो आपका वोट ऑफ थैंक्स जब चालू था तभी मैं ज्वाइन हो गया था। अगर आप 10 मिनट क्लास में लेट जाते हैं तो 10 × 85 पीपल, तो 8 से 50 मिनट से आप क्या कर रहे हैं? हमारे नेशन का लॉस कर रहे हैं। तो फिर बड़ी बड़ी भारतीय नेशन के बारे में बोल के कुछ फायदा नहीं है। इफ यू आर प्रोफेशनल, गो क्लास इन टाइम, और क्लास में से इन टाइम बाहर भी आओ। तो सेव द टाइम, खुद का भी सेव करो और बाकी लोगों का भी करो, जो कि टाइम उनको एनर्जी लगे, राइट? उसकी Yes, sir. वैल्यू पहचानो और उसको वैल्यूएबल बनाने की कोशिश करो। और आप जो भी कुछ क्लास में टीचिंग करेंगे उसमें मीनिंगफुल इंटरेक्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सोच समझ के और उनकी जो नीड है, दैट इज एजुकेशनल नीड, उसको सेटिस्फाई करने के लिए 100% एफर्ट्स टीचर्स अगर लेते हैं सिस्टमेटिकली वे, और टीचर कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करते हैं, तो इट मीन्स ही इज अ प्रोफेशनल टीचर। और आप मेरे से सब लोग सहमत होंगे कि प्रोफेशनलिज्म ये हम सब लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि कुछ कुछ बिजनेसमैन रहते हैं, वो उनके जो प्रोफेशन रहते हैं उनकी इथिक्स 100% फॉलो करते हैं। वैसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने भी कहा है कि टीचिंग इज एन नोबेल प्रोफेशन। तो हम सब लोगों ने इसकी तरफ से नोबेल प्रोफेशन बोल के ही देखना बहुत जरूरी है, तो ही हमारे इथिक्स अच्छे रह सकते हैं। और अगर हमें इसको प्रोफेशनली हमारे टीचिंग को बनाना है, तो हमें हम 100% हमेशा टीचर रहना पड़ेगा या लर्नर रहना पड़ेगा। अडचण नाही। यस, नितिन सर, नितिन लगट कुछ बताना चाहते हैं हम सब लोगों को, बताइए नितिन जी। ओके, Can I add one? Sir, can I add यस one thing? हाँ, यस अभी प्लीज। अभी टीचर का एक काम होता है कि जनरेशन को निर्माण करना या उनको समाज में बेहतरीन लोग ऐसे बनाना एक टीचर का क्योंकि Now the अलग aim अलग of sir, now the aim of teacher is not only make a good student for our nation. Now the aim of teacher is make a global student, global यस सर student. बराबर है Yes, सर हाँ that's why global student बनाने के लिए हमें खुद को पहले global बनाना पड़ेगा ना। यस यस तो उसी के हम्म। हिसाब से हमें क्योंकि अभी प्रोफेशनलिज्म हम बात करते तो हर एक जैसे आपने कहा कि बिजनेसमैन का प्रोफेशन वो एक अलग होता है, लेकिन टीचर का प्रोफेशन वही होता है कि जो जनरेशन को अच्छे जनरेशन को निर्माण करना। Which is most important thing, sir, in teacher profession? सर वन इज वी आर एन जैसे कि अभी हम पढ़ाते वैल्यूज गांधीयन वैल्यूज हम पढ़ाते तो वी आर नेशंस। हम स्टूडेंट को फीलिंग देना है कि वी आर नेशंस, क्योंकि उसमें हम एक सोशल फैब्रिक एनालिसिस भी करते हैं कि क्योंकि हम नेशन की बात करते हो कि मेरे मेरे सिवा नेशन नहीं होता ना, तो नेशन को बिल्डिंग करना है, तो मेरे को खुद को भी वैसा काबिल बनाना है। तो एक Yes, यस सर नेशन को बिल्ड करने के लिए एक एक स्टूडेंट को जोड़ के सोसाइटी डेवलप करने के लिए, सोसाइटी से नेशन डेवलप करने के लिए, which is most important thing in our classroom or in the relation between student and teacher, जो थोड़ी बहुत अभी ये जनरेशन में मिसिंग है। वो
तो बहुत ही अभी चैलेंजेस है सर, आप जो कह रहे सर बहुत मिसिंग है सर। बहुत मिसिंग है सर, बहुत चैलेंजेस हैं उनको, क्योंकि एक चीज बहुत मिसिंग है कि स्टूडेंट का 100% टीचर के ऊपर का विश्वास। बराबर है सर। वो अगर आपके ऊपर 100% विश्वास करता है तो उसमें बहुत सारे चेंजेस ऑटोमेटिकली आते हैं। और वो अगर हमारे ऊपर 100% विश्वास नहीं कर रहा है तो हमें आत्म परीक्षण करने की जरूरत है कि ऐसा क्यों हो रहा है। वाई ही इज नॉट बिलीव मी ऑन 100%, वाई ही इज बिलीव मी 80%, 90%, 83%, ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसके बारे में हमें सोचना चाहिए कि हम कहाँ कम है इसलिए 100% बिलीव नहीं कर रहा है। और जब तक वो 100% बिलीव नहीं करेगा उसकी आदतें चेंज नहीं होंगी। वो जो नॉलेज उसको मिला है उसको अप्लाई नहीं करता अपने लाइफ में। बहुत सारे एम.कॉम स्टूडेंट हम लोगों ने देखे होंगे कि जिनको विड्रॉलशिप भरना नहीं आती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स रहते हैं अलग अलग प्रोफेशन से बाहर गिरे हुए, उनको उनके प्रोफेशन से स्किल्स यूज नहीं करना आता है बिकॉज दे आर नॉट बिलीव ऑन द नॉलेज विच दे गेट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस। दैट्स वाई प्रोफेशनल एनवायरनमेंट बहुत जरूरी है। आप अगर जो भी कुछ पढ़ रहे हैं उसके बारे में उनका 100% विश्वास और इमोशन रहना ये बहुत जरूरी है आज के जनरेशन के लिए। देन नेक्स्ट इज प्लानर। आप सब लोग अच्छे प्लानर है। Which type of planning is most important for every teacher? So the syllabus planning and the course That is planning. teaching plan. First is Yes, sir. teaching plan, right? Teaching plan. Yes, sir. Second is time plan. Time plan. Yes, sir. Then third is communication plan. Or fourth is interrelationship plan. Okay. These four plans are most important for every teacher क्योंकि ये चार प्लान तो हमें करना ही पड़ेगा। अगर आपको कोई बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग में भी जाना है और क्लास में भी इंपॉर्टेंट लेक्चर लेना है तो व्हाट वी डू, आपको अगर आपका लेक्चर एक्सचेंज करना है तो आपके कलीग्स और फैकल्टी के साथ आपके रिलेशन बेटर होना बहुत जरूरी है तो ही आप एक्सचेंज कर सकते हैं। तो आपकी प्लानिंग बहुत अच्छी होना बहुत जरूरी है। तो दैट्स टीचर की अच्छी प्लानिंग होना चाहिए, उसका डिटेल हम आगे देखने वाले हैं। ये लाइफस्टाइल में आता है द पावर ऑफ थॉट। ये पावर ऑफ थॉट टीचर के पास होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। हमें जो भी कुछ प्रेरणा मिलती है, जो भी कुछ ऊर्जा मिलती है, शक्ति मिलती है, ये हमारे विचारों से मिलना बहुत जरूरी है। डू यू एग्री विथ मी? Yes, sir. यस If we इसका have positive thought, then we can uh, inculcate them in students and enhance इसके बारे their में कोई quality एग्जाम्पल of बता lifestyle. सकता है? ये हमारी थिंकिंग, ये हमारी पावर है। डू यू हैव एनी एग्जाम्पल विद शेयर विथ मी? Like, sir, in our college, VSS UT Bulla, we are inculcating students to have innovative assignments in which they will choose a topic and they will show what are the ideas to implement that. So we have assignments like that. So that is our power of thought, that it will improve their real-time application abilities as they are studying engineering. Okay. Suppose you are doing something new for student or something innovative for your institute. At that time, some teachers are support to you and some teachers are not with you. ऐसा होता है कभी कभी। हाँ सर, होता है। 100% तो लोग हमें सपोर्ट नहीं कर सकते ना, ऐसा पॉसिबल भी नहीं सोसाइटी में। ऐसा होता है। यस सर, होता है। तो एट दैट टाइम योर थॉट्स इज द योर पावर। आपकी जो सोच है, आपने जो तत्व को आत्मसात किया है, दैट इज योर पावर। So what I think personally is, I think that person would have been in some problem or some situation, because of that he or she is behaving like that at that position. So I think in that way, and I try to solve their problems if I can. Otherwise, I will allow myself to continue with that positive thought
and go with the people who are more positive. ओके अगर आपके स्टूडेंट को ही आप आपके छोटे भाई बहन मानते हैं तो व्हाट हैपन अगर उसको ही आपकी फैमिली मानते हैं तो व्हाट हैपन what happen in our thinking process, what happen in our approaches, what happen in our energy level, what happen in our activity, क्या इफेक्ट आएंगे उसमें इनको ही हम हमारे बच्चे मान के चलते हैं तो कुछ चेंज आएगा भावना बदलने के बाद सर हमारा इनपुट ज्यादा होगा और हम लोग चाहेंगे कि वो एक अच्छे ह्यूमन बीइंग के तरह उभर के आए राइट डेफिनेटली हम खुद के बच्चे के लिए जो करते हैं वही उनको समझ के अगर उनके साथ हम रहते हैं ऑनेस्टली तो ऑटोमेटिकली योर टीचिंग फ्लो इज गुड योर एम इज गुड और उनकी आप केयर भी अच्छी लेंगे उनको 100% आप अच्छे सिटीजन बनने के लिए एबल करने की कोशिश करेंगे तो दैट इज पावर ऑफ थॉट टीचर ने स्टूडेंट को क्या मानना चाहिए इसीलिए ऐसे कहते हैं कि टीचर हैव नॉट डिफरेंट इंडिविजुअल लाइफ और सोशल लाइफ ये अलग अलग नहीं रहता है टीचर के कोड ऑफ कंडक्ट में लिखा है कि टीचर को जो उनका जो इंडिविजुअल लाइफ है वही उनका कॉमन लाइफ रहता है और जो उनका कॉमन लाइफ है वही उनका इंडिविजुअल लाइफ रहता है क्योंकि उसके जो स्टूडेंट्स है he is the parent of all classroom that's why he have the not different of these two lives मगर बाकी जो प्रोफेशन के लोग हैं उनके लिए उनका इंडिविजुअल और प्रोफेशनल ये अलग अलग रहता है मगर वो टीचर के लिए नहीं रहता है तो दैट इज पावर ऑफ थॉट और उसको हमने एक्सेप्ट करना और वो हिसाब से स्टूडेंट के साथ हमारे रिलेशन मेंटेन करना दैट इज अ पावर ऑफ थॉट एंड दिस इज ग्लोबल पर्सनैलिटी ऑफ टीचर और गुरु पहले इनको हम गुरु कहते थे अभी आज के जमाने में हम इनको ग्लोबल वर्ल्ड में उनको हम टीचर कहते हैं तो ये उनकी पर्सनैलिटी है तो इसलिए हमने टीचर के लिए कुछ पीस हमने आज देखे हैं दैट इज प्रिपरेशन परफेक्शन प्रेजेंटेशन प्रेजेंस ऑफ माइंड प्रोफेशनल प्लानर पावर ऑफ थॉट जो भी हमने देखे उसको आगे जाने से पहले इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन एनी डाउट और एड सम वैल्यूज इन दिस पीस तो प्लीज एक्सप्रेस योर सेल्फ जो भी हमारा अभी अब तक हुआ है टीचर के पर्सनल के बारे में इसके बारे में अगर आपको कुछ कहना है तो आप कह सकते हैं या नहीं कहना है तो फिर हम आगे जाएंगे यू हैव टू 5 minutes डिस्कस ऑन होल 15 स्लाइड ठीक चल रहा है जो चल रहा है वो Yes, sir, it is interesting. सर ओके कोई स्लाइड में आपको कुछ ऐड करना है जो हम एग्जांपल देते भूल गए या कुछ एक्सप्लेन में एडिशन आप करना चाहते हैं तो यू कैन ऐड क्योंकि आप भी टीचर है हम लोग उसमें ऐड कर सकते हैं आप ऐड भी कर सकते हैं पैरेलल एग्जांपल भी बता सकते हैं या उसके बारे में आपकी कुछ नई कंसेप्ट है उसको भी ऐड कर सकते हैं देन वी गो नेक्स्ट स्लाइड इसके दो मीनिंग है एक तो आपको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आया है नहीं तो आपको कुछ भी ऐड नहीं करना है सर मे आई सर यस प्लीज सर जैसे आजकल अभी जैसे जेंजी बच्चे हैं मैंने जो ऑब्जर्व किया है इफ वी आर मोर फ्रेंडली विद देम देन द टीचिंग becomes better and if we are more strict with them we are unable to handle them properly so they see not only a parent in the teachers and they expect us to be more friendly so that we have like mostly observed in these
kids nowadays. So I think that the concept of like being only respectful and only fearing the teacher should change. राइट, और वो होना भी चाहिए. If he is fair Yes, about the teacher, how he can clear his concept or doubt in class. लाइक हमारे टाइम में हम थोड़ा डरते थे सर, लेकिन आजकल के बच्चे वो चाहते हैं कि हम उनसे इंटरेक्ट ज्यादा करें और उससे वो हमने ज्यादा अगर सीखना स्कूल चाहते हैं. कॉलेज में गलती की, अगर हमारे घर पे समझ जाए तो स्कूल में भी पनिशमेंट होती थी, घर पे भी पनिशमेंट होती थी, जी डबल सर. पनिशमेंट. अब वैसा नहीं है. तो अभी उनको मैक्सिमम अंडरस्टैंडिंग होने के लिए स्कूल और कॉलेज का और फैमिली का भी रोल है. दैट्स वाई द सिनेरियो इज चेंज नाउ, और उसको हमने एक्सेप्ट करना चाहिए यस सर. और उसको पॉजिटिव पकड़ के आगे चलना चाहिए. यस, थैंक यू. एनी मोर? थैंक यू मैडम. पहले कंपोजिट संयुक्त फैमिली था सर. हाँ, तो उसके कारण हमारे संस्कार में वो जाने अनजाने में बहुत सारे लोगों से इम्पैक्ट होता था. अभी आज सिंगल फैमिली होने के कारण भी हर बच्चे को फैमिली से जो मिल रहा है वो नहीं मिलता है, और वही जनरेशन हमारे सामने क्लास में आता है. तो हमारे लिए यही चैलेंजेस है, इसको मैनेज कैसे करना है सर. ओके, चैलेंजेस राइट है. है सर, बराबर है. अब अभी वो हमारे हाथ में नहीं कि वो ज्वाइंट फैमिली रहे या न्यूक्लियर फैमिली रहे. ओके, ठीक है. देन माय नेक्स्ट स्लाइड इज इंफॉर्मेशन, नॉलेज एंड एप्लीकेशन. जो भी आपको गूगल पे सब कुछ मिल रहा है, दैट इज इंफॉर्मेशन ओनली, दैट इज नॉट नॉलेज. क्लासरूम में टीचर इंफॉर्मेशन को नॉलेज में कन्वर्ट करता है, देन स्टूडेंट कैन अप्लाई द थिंग्स. तो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि हम तो हार्डवेयर करने वाले लोग हैं. तो एआई से ज्यादा डरने की कुछ जरूरत नहीं है. क्योंकि आप देखो, जो लोगों ने एआई से पीपीटी बना के आप लोगों को पढ़ाया होगा, एवरी पीपीटी सिमिलर, नथिंग इज चेंज, नथिंग. बहुत सारा कुछ उसमें इंटरेस्टेड रहता ही है, ऐसा कुछ नहीं है. कुछ सिंबॉलिक रहता है सब कुछ. तो एक आधे दो बार वो ठीक लगता है, बाद में आप ही बोलते हैं कि ये कुछ ज्यादा ठीक नहीं है. तो इसलिए टीचर का जो रोल है, दैट इज कन्वर्ट टू इंफॉर्मेशन इन नॉलेज and motivate the student for apply the knowledge in his life, because life skill भी उसके डेवलप होना बहुत जरूरी है. then every teacher have this type of plan. first is urgent and important. कोई चीज है जो अर्जेंट है एंड इम्पोर्टेंट है, जैसे किसी को कुछ फिजिकल पेन हो रहे हैं, तो अर्जेंट है और इम्पोर्टेंट भी है कि उसको हम हॉस्पिटल में बताएं. सेकंड है नॉट अर्जेंट बट इम्पोर्टेंट. जैसे कि आपके कोर्स के आखिरी आखिरी में कुछ तो छोटी टेस्ट होंगी, दैट इज नॉट अर्जेंट, अभी नहीं होने वाली, मगर वो इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर आपका ग्रेड भी रहेगा कि कौन सा ग्रेड आपको मिल रहा है. देन अर्जेंट बट नॉट इम्पोर्टेंट. कोई लाइव मैच चालू है, उसका स्कोर देखा तो लाइव में ही वो उसकी मजा है, बाद में कुछ मजा नहीं है ना. पानी पूरी हम पार्सल में ला के नहीं खाते, पानी पूरी हम जगह पे ही खाते हैं. तो नॉट अर्जेंट इम्पोर्टेंट बट अर्जेंट है. एंड लास्ट इज नॉट अर्जेंट नॉट इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण भी नहीं है और अर्जेंसी भी नहीं है. तो दीज आर 4 टाइप ऑफ टाइम प्लान. इसमें से आप कौन सा चॉइस करेंगे? विच वन इज बेटर फॉर टीचर? यस, 65, 23, 81 रोल नंबर. प्लीज गिव अ रिस्पॉन्स. विच इज द बेटर टाइम प्लान फॉर टीचर? और आप इसमें से कौन सा चॉइस करेंगे? अर्जेंट इंपॉर्टेंट, नॉट अर्जेंट इंपॉर्टेंट, अर्जेंट बट नॉट इंपॉर्टेंट, नॉट अर्जेंट नॉट इंपॉर्टेंट? I would go with the first one. Do the task which is urgent and important first. ओके, यस. और बाकी लोग क्या करेंगे इसमें से? I am also urgent and important. That first one. यस So सर, the प्लीज. first one, फर्स्ट वन. Yes. ओके, the अर्जेंट first इंपॉर्टेंट. one, फर्स्ट urgent वन. and important.
ओके, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि आपने सेकंड चॉइस करना चाहिए, नॉट अर्जेंट बट इम्पोर्टेंट। आपको अगर पता चले कि कोई चीज बहुत इंपॉर्टेंट है तो उसको अर्जेंट होना नहीं देना चाहिए, है ना। तो अगर आपको कभी डॉक्टर ने बताया होगा, सलाह दी होंगी कि भाई आपको ऐसा पेन हो सकता है, आपने अगर ध्यान दिया नहीं तो डेली एक्सरसाइज करो, योगा करो, खुद को फिट रखो और चीजों को अर्जेंट मत करो। तो नॉट अर्जेंट बट इम्पोर्टेंट, ये प्लान अगर हम चॉइस करते हैं, कोई भी चीज हम अर्जेंट नहीं बनने देंगे, उसका इंपॉर्टेंट पहचानेंगे और जब भी तभी काम खत्म करेंगे, तो दैट इज अ बेटर प्लान एज पर माय नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। ठीक है। और सर, कैन आई ऐड समथिंग टू दिस? यस। सर, अगर हम लोग वो सेकंड वाला में जाते हैं कि नॉट अर्जेंट बट इम्पोर्टेंट, वहां पे वो पैनिक वाला चीज भी हम लोग का नहीं होता है, क्योंकि हम लोग अगर अर्जेंट भी बोलेंगे, इम्पोर्टेंट भी बोलेंगे, तब तो वो डर में कभी कभार गलती भी हो जाती है कि हम लोग सोचते हैं कि हड़बड़ी में जल्दी से करना है, या इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी अर्जेंट, तो हम लोग दोनों में ही स्ट्रेस देते हैं। तो अगर एक में ज्यादा फोकस करें और बाकी दूसरा जो है उसमें थोड़ा लेस फोकस्ड रहे, तो शायद हम लोग ऑन टाइम या एग्जैक्टली फिनिश कर पाएंगे। हाँ, आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट, एंजाइटी लेवल, अगर आपको अर्जेंट चीजें अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए। जो हमारे हाथ में है उसको अर्जेंट मत होने दो, उसका इंपॉर्टेंस पहचानो और उसको जब भी तभी खत्म करो। तो दैट इज योर प्रायोरिटी लिस्ट, आपको उसको एक प्रायोरिटी लिस्ट बनाना पड़ेगी और वैसे उसको वर्कआउट करना पड़ेगा। ओके। हाँ सर, राइट, थैंक यू सर। यस, और एनीवन वांट्स ऐड सम वैल्यूज, इसमें कुछ करना है आपको एडिशन? ओके, आगे जाएंगे। नेक्स्ट प्लान है हमारा कम्युनिकेशन का प्लान। कम्युनिकेशन में कंप्लीटनेस, कंसाइजनेस, कंसिडरेशन, करेक्टनेस, क्लैरिटी, ये हमारे प्लान है। कंप्लीटनेस यानी जो भी हम कुछ बात कर रहे हैं उसका अर्थपूर्ण होने के लिए, अर्थबोध होने के लिए उसको कंप्लीटनेस बहुत जरूरी है। जो भी हम कुछ बात करेंगे, अब आपको पता है कि सब लोगों के पास बहुत कम टाइम है, तो बात करते टाइम कंसाइज में बात करो, कम से कम मात्रा में, कम से कम शब्दों में हमने हमारा जो भी कुछ रखना है सामने, मत या भावना, उसको प्रकट कर सकते हैं। ऐसी बात करो जिससे लोग उसको कंसीडर करें, उसका इम्पोर्टेंस, उसके अगर स्टडीड करके आप उसको सबके सामने रखते हैं और लोगों के उसमें अगर लाभ है तो पीपल कैन कंसीडर व्हाट यू थिंक। तो कम्युनिकेशन करते टाइम लोगों ने हमारा कम्युनिकेशन कंसीडर करने के लिए लोगों को कंसीडर करना बहुत जरूरी है। देन करेक्टनेस, जो भी आप बात बता रहे हैं उसमें कुछ लॉजिकल थिंकिंग होना बहुत जरूरी है, उसमें कुछ करेक्ट चीज आना जरूरी है, तो कि सामने वाले को लगे कि ये ठीक है। आप जो भी कुछ बताएंगे उसमें क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। माइंड में उसके बारे में ड्वेल मीनिंग नहीं आना चाहिए, वन ही मीनिंग है, ओनली वन सिंगल मीनिंग आना बहुत जरूरी है, दैट इज क्लैरिटी। देन जो बात हम लोगों से करेंगे वो नम्रता से करें, दैट इज कर्टसी। वो सामने वाला भी रिस्पेक्टेड है, वो भी एक टीचर है, दैट इज कर्टसी। और कॉन्क्रीटनेस भी उसमें जरूरी है। और ये सब सेवन सीज है जिससे हमारा कम्युनिकेशन जो है वो ज्यादा से ज्यादा अच्छा होता है। तो जैसे आपने शुरू में बताया कि स्टूडेंट को होलिस्टिक डेवलपमेंट करने के लिए एजुकेशन है, तो टीचर को भी होलिस्टिक डेवलपमेंट करने के लिए कुछ चीजें हैं जो टीचर ने करना चाहिए। उसने डायरी राइटिंग करना बहुत जरूरी है कि उसका क्या प्लान है, कल क्या करने वाला है, कौन से प्लान उसके एग्जीक्यूट हुए हैं, कौन से प्लान उसके हुए नहीं है और क्यों नहीं हुए, दैट इज मेंशन इन हिज डायरी। उसको पता चले कि हमारा वर्किंग का जो डेली रेट है, व्हाट इज माय वर्किंग रेट, वो समझ में आना बहुत जरूरी है। सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए वो जरूरी है, सेल्फ रिकॉर्ड के लिए वो जरूरी है। टीचर आपस में एक्सचेंज ऑफ आइडिया बहुत जरूरी है, इसलिए हम वर्कशॉप, कॉन्फ्रेंसेस, अलग अलग कोर्सेज करते हैं। तो वो उससे टीचर के इसमें पॉजिटिव चेंज आता है। और लाइफस्टाइल में अगर जरूरी है तो चेंज करना चाहिए। जैसे बहुत सारे टीचर्स जो है उनका फिजिकल मैनेजमेंट ठीक नहीं है, तो उन्होंने करना बहुत जरूरी है, जिससे उनकी पॉजिटिव थिंकिंग बढ़ जाएगी। क्रिएटिव वर्क डेली करें, क्रिएटिव वर्क से हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है, बहुत खुशी मिलती है, इसलिए कुछ क्रिएटिव वर्क करें।
try to file the patent, try to file the copyright, कुछ अच्छे अच्छे पेपर्स पब्लिश करो, कुछ अच्छे वर्कशॉप अरेंज करो। तो कुछ तो भी क्रिएटिव काम में हम इन्वॉल्व अगर हो तो हमारी खुशी मेंटेन रहती है। एक्सेप्टेंस पावर जो है हमारी, जो सच है वो सच और फैक्ट को एक्सेप्ट करने की पावर हमारे में हमने डेवलप करना बहुत जरूरी है। कॉमन प्रेयर के ऊपर ध्यान दें, कॉमन प्रेयर से भी हमारी एंजाइटी दूर होती है और हम फ्रेश रहते हैं, स्ट्रेस फ्री रहते हैं। इसलिए कॉमन प्रेयर भी करना बहुत जरूरी है। और इमोशनल इंटेलिजेंस को डेवलप करें, सामने वाले को समझ के खुद की सिचुएशन को आगे आगे लेके जाके भी हम प्रोग्रेस कर सकते हैं। और हमेशा टीम वर्क के ऊपर फोकस करें, उससे ज्यादा खुशी मिलती है। एवरी टीचर हैव अ गुड प्रोफाइल बट डिपार्टमेंट हैव नॉट गुड प्रोफाइल। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए, जिसमें टीम वर्क बहुत जरूरी है। तो टीम वर्क भी हमने करना बहुत जरूरी है। कोई भी स्ट्रेस डायरेक्टली आता नहीं है, पहले बहुत सारे कामों का प्रेशर जो बनता है, बाद में वो टेंशन में कन्वर्ट होता है और फिर स्ट्रेस आता है। अगर हमें स्ट्रेस नहीं आना देना है तो जो काम है वो जब के तब अगर हम करते हैं, देन वी विल बी टेंशन फ्री। तो ये भी हम कर सकते हैं। कुछ स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए भी कुछ है, जैसे प्रॉपर प्लान करो, निगेटिव थिंकिंग को अवॉइड करो, सेल्फ सेटिस्फेक्शन के ऊपर ध्यान दो, ओपन रहो, आइडिया एक्सेप्ट करो लोगों की भी, हेल्दी एनवायरनमेंट में रहो। प्रॉब्लम अगर आते हैं बहुत सारे सबको, उसको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करने की कोशिश करो, सामने वाले से प्रॉपर कम्युनिकेशन करो, खुशी रहने के लिए सेंस ऑफ ह्यूमर का यूज करो, एटोसाइजेशन भी बहुत जरूरी है, पॉजिटिवली सोचो, खुद के एबिलिटी के बारे में अवेयर रहो, डीप स्लीप बहुत जरूरी है, डीप ब्रीदिंग भी बहुत जरूरी है, फ्लेक्सिबल रहो, रिलैक्स रहो, और हमारा जो लाइफ है उसको ज्यादा से ज्यादा खुश करने की कोशिश करो। ये दो चीजें मैंने आपके सामने रखी है, उसमें से आप क्या चॉइस करेंगे? आर यू बिकम अ फेमस टीचर और गुड टीचर? Good teacher, sir. गुड टीचर सर। वेरी नाइस। फेमस टीचर से परेशानी बढ़ती है और हमारी नींद खराब होती है, इसलिए सब लोग चीज कोशिश करें कि गुड टीचर रहे। और गुड टीचर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? अगर हमें अच्छा टीचर बनना है तो पहले अच्छा इंसान बनना बहुत जरूरी है। तो हम सब लोग ट्राई करें कि हम हमारे डिसीजन लेते टाइम हमारा कॉग्निशन और हमारा इमोशन, इनको बैलेंस रखें, अच्छा टीचर बनने की कोशिश करें। तो ये अच्छा क्लासरूम में लीडरशिप और एकेडमिक लीडरशिप होने के लिए एक अच्छा टीचर बनना, अच्छा इंसान बनना, उसकी बेसिक प्रिपरेशन है, ऐसा मुझे लगता है। तो थैंक यू टू ऑल पीपल, यू आर लिसनिंग वेरी पेशेंटली, सिंसियरली। तो थैंक्स टू योर कोऑर्डिनेटर, director, and all these participants. Now, my side, my lecture is over. Thank you. If you have asked any question, doubt, you can ask, please. Thank you very For much, 1 sir. minute, you can ask. Dr. Sarika Jadhav ma'am, you can ask. Okay. So, teachers, here my lecture is over. If you have any doubt, you can ask. Sir, not to ask question, but one actually remark I want to give. So the last part of the part of your interaction with us makes you a part actually good and a famous teacher, because so whatever thinking or the idea that you are sharing to us, like a different P and different C's, so that is a good the good ornament for a teacher when you can go to the part teaching a part in class actually. So in in our recommendation, we now have a good teacher and also have a just how to make the famous also, that we make the part actually a clear idea to us. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Anybody have any questions? Sir, may I propose vote of thanks? Yes, ma'am, please. Yes, madam. Okay. Thank you, sir. Thank you, sir, for such a dynamic, interactive session.
It was thought-provoking, informative, insightful. You have devoted your valuable time on us. So I, on behalf of organizers and participant, extend a warm thanks, gratitude from all of us. Thank you, sir. We are looking forward to have a session again with you in future in any other platform. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Thank you.